the Chashak 2024-25 selection trials. The toss is going out in the middle. You can see all the players lined up, both the teams. This is going to be a really great final. The final will be between Sunrise Sports Club Association and Union Cricket Academy. Match will begin shortly. All are in the middle for the toss, both the captains. You can see all the dignitaries over there. And here got the toss, I believe. Very good morning to everyone. और टॉस हो चुका है दोनों ही टीमों के बीच. कुछ ही देर में पता चलेगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम पहले गेंदबाजी. दूसरा वर्ष है ये अंडर 14 ट्रायल का सेकंड शताब्दी चषक. आप देख रहे हैं 2024-2025 अंडर 14 सिलेक्शन ट्रायल. दिस इज द फिनाले बिटवीन सनराइजर्स स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन और यूनियन क्रिकेट एकेडमी के बीच में. Here goes the coin. The coin is spun. Definitely will get the result in a while. सभी का स्वागत है और धन्यवाद है सभी जो यहाँ महानुभाव यहाँ पे उपस्थित रहे हैं. महापुष्कर सर आप देख रहे हैं वहाँ से इशारा करेंगे कुछ ही देर में कि कौन जीते हैं टॉस, क्या निर्णय होगा. स्पोर्टिंग टीम से धुमाल भी वहां पे उपस्थित है. You can see Dhumal sir over there. साथ ही साथ सभी कोच वहां पे उपस्थित प्लस महापुष्कर सर एंड dignitaries over here, and you will see the cup being revealed. Definitely you can see the Champions Cup and the Runner Cup on screens.
Match in a while. We'll get the result of the toss. Let's see who has won the toss and what they have elected. Both the teams, Sunrise Sports Club Association and Union Cricket Academy. All the best to both the teams. You're watching the under 14 seconds Shatabdi Chashak 2024-25 finale. So Union Cricket Academy, they have won the toss and they have elected to bat first, and they have requested Sunrise Sports Club Association to field first. We'll be back in a short while with all the action. Toss Saurav, you have elected to. बैट। So कैसे लग रहा है पूरा जो फॉर्मेट है? It is under 14 and it is a very good platform for all you youngsters. हाँ, बहुत बहुत कुछ इधर सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा टैलेंट है इधर सबके पास। तो हम लोग को खेलना है और फाइनल जीतने की कोशिश करना है। क्या लग रहा है, पहले बैटिंग लिया है तो कितने तक स्कोर करने की ऐसा लग रहा है कि स्टेज सेट होगा? 300 प्लस टारगेट है हम लोग का, तो वही है। Who are the players you are looking out for from your team? मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 2-3 है बैट्समैन और बस। चलो, thank you so much. All the best for your match. This was Saurav. They have won the toss and they have elected to bat first. Hi Advait, congratulations for reaching the finals, but you have lost the toss. You are fielding first. यस। तो अभी बॉलर्स को अपने प्लान के हिसाब से डालना है और वो लोग को कम से कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट करने का है। क्या सोच रहे, कितने तक रोकने का उनको? अभी अराउंड 150 टू 100 के अंदर उनको रोकने का प्लान है। Any specific batsman you are targeting? नो, अभी हर एक बैट्समैन को कैसे जल्दी आउट कर सकते हैं। हाउ इज द मूड इन द कैंप? कैसे लग रहा है ये पूरा जो टूर्नामेंट गया है, ये पूरा सीजन गया है, कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अभी हर एक मैच हम लोग जीत के आए फाइनल को,
तो अभी ये भी फाइनल अच्छा लग रहा है टीम में। All the best, Advait. Congratulations. All the best for reaching the finale. So, Sunrisers, they have lost the toss. They are fielding first. So, let's get back to the action in short while. बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाला है दोनों ही टीमों के बीच में। अंडर 14 के ट्रायल्स के मुकाबले, फिनाले का मुकाबला, दूसरा शताब्दी चषक 2024 और 2025। आप देख रहे हैं विकेटों के बीच अजय कदम सर, काफी बड़ा नाम, बहुत ही बढ़िया कोच रहे हैं और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं अपने दौर में।
the toss, then they have elected to bat first, whereas Sunrise Sports Club Association, they'll be bowling first. All the best to both the teams. This is the finale of Shatabdi Chashak. This is the second season. The action will begin, I believe, within 5 minutes. You can see the huddle of the bowling team. You're all set. Both the umpires are there in the middle. So अंडर 14 जहाँ पे नींव रखी जाती है हर एक खिलाड़ी के लिए, अंडर 14. You can see the squad of Union Cricket Academy. Saurav Sinha is the captain. Adarsh Kanodia, Ajay Pal, Ansh Nathwani, Karthik Sabhan Dasani, ऋषभ सोनावने, सनमित कोटमीरे, श्रीजन बोरसे, सिद्धांत सिंह, सोहम आहिरे, Vijaypal and Ninad Thakre. Playing 11 for Sunrise Sports Club Association full squad. Advait Joshi is the captain. Arjun Jadhav, Arnav Mirge, Atharva Wadekar, Jay Thakkar, Manthan Gowda, Nakul Sharma, Samiksh Nair, Shaurya Navle, Vedant Patil, Yash Sagvekar and Swar Bhosle. This is the whole squad. Let's see who makes it to the cut of the 11 from both the teams. You can see Sanjay Sawant, one of the coach of the team, fielding side, Sunrise Sports Club Association. The first delivery. Here goes the call from the umpire. Manthan with the ball in hand. He'll go right arm over the wicket. Nice delivery. Very good delivery. Nice forward defense. A confident start from both the bowler and the batsman as well. This is going to be a long day. Definitely. 2 innings match. You're watching the finale of Shatabdi Chashak. This is the season second of the under 14 trials. Next delivery.
Nicely bowled once again. Right on the off stump channel. Nicely played. Just a single opens his account with the single. That's the first run with the bat from Sanmeet. The right-hander batsman will be on strike for the first time. Lots of applause for the first run. Definitely this is the final, and each and every run will be cheered by the teams. On strike it will be Ansh Nathwani. Lot depends on this opening pair. This is a very brilliant delivery from the bowler right on the off stump channel, asking too many questions to the batsman. You can see the action replay. Nicely bowled. Wanted to drive, but there was no proper foot movement. Luckily there was no edge found. 3 deliveries in this finale, and it is already some action going out. This is nicely bowled. This is up in the air, but luckily lands safe. Otherwise it would have been a dolly to the backward point region. Still 2 deliveries to go in the first over. This is just a start and quite an action. You can see a very good start from the bowler Manthan. This time nicely played on the front foot, but straight to the short mid-on fieldsman. Just 1 run on the board. It has been a confident start from both the batsmen. Just trying to get on the front foot, and it has been a good spell, good start from Manthan. This is played upishly, takes the outside edge of the bat, goes down to the third man region. Nicely fielded by the fieldsman over there. Just a single. So both the batsmen, they have opened their account. So at the end of the first over, it's 2 runs on the board. This is the finale. Mr. Ajay Kadam sir is with us. A very good morning, sir. Union Cricket Academy won the toss. They have given a positive signal. They have opted to bat first. Both the batsmen opening their account in the first over. With the new ball in the hand, it will be Arjun Jadhav. Arjun Jadhav from the opposite end. On strike, it will be Ansh Nathwani. Nicely bowled. Slower one this time to start with. Nicely played down to the deep square leg region. Nicely fielded by the batsman at the deep fine leg region. Just kept the batsman for a single. With this, score moves on to 3 for no loss. दोबारा अपना गार्ड लेते हुए, क्योंकि इस ओवर से पहली मर्तबा बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज. स्ट्राइक एंड पे होंगे इस मर्तबा सनमीत. सनमीत कोर्ट में रहे. थोड़े से क्षेत्र रक्षण में तब्दीली आप देख रहे हैं. अब एक डीप फाइन लेग तैनात किया गया है सनमीत के लिए. अगली गेंद अपने फॉलो थ्रू में थोड़ा सा मार्क में चूक गए यहाँ पे गेंदबाज, तो दोबारा रिबॉल करेंगे उस गेंद को. अर्जुन जादव, उभरते हुए सितारे, ये सभी आज आपको दिख रहे सेंट्रल मैदान में स्पोर्टिंग क्लब पे फिनाले में.
शताब्दी चषक पर्व दूसरा. This is way down the off stump. No signal from the umpire. अगली गेंद. This is nicely bowled, nicely played this time. A good square drive and the first boundary of the finale comes from the braid of Sanmeet. बहुत बढ़िया हिट सनमित द्वारा. गेंद को आने दिया, थोड़ी स्लोअर गेंद थी ये. गेंद को आने दिया, हल्के ढंग से इसको स्क्वायर ड्राइव कर दिया. बहुत ही बढ़िया शॉट. स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पे. दोबारा सज्ज होते हुए बल्लेबाज सनमीत कोटमीरे. बढ़िया गेंद फ्रंट फुट पे आके बढ़िया ढंग से खेल दिया. शॉर्ट कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक तैनात, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं. बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी और उतना ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण. नेक्स्ट डिलीवरी. वंस अगेन अर्जुन गोइंग राइट आर्म ओवर द विकेट. Nicely played this time down to the mid-on region. Nicely fielded once again. No chance of a run over there. 5 deliveries in this over. Last delivery to go of the second over. Sanmeet batting on 5 runs with the help of a boundary. This time wanted to cut it, but there was no bounce on that delivery. Went straight to the wicket keeper. So at the end of the second over, it's 7 on the board. Both the batsmen in the middle, you can see they're discussing how to go about in this innings. Sanmeet and Ansh Nathwani. A steady partnership. Definitely the bowlers, the bowling side will also want to take their chances while there is shine on that delivery, while the ball is quite hard. It will swing a little bit in the morning conditions. There will be some moisture in the wicket as well. बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्क लेंदी है गेंद, चकमा देके बल्लेबाज को. ऐसा लग रहा था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे बल्ला दिखाकर डिफेंड किया बहुत ही सही तकनीक के साथ अंश ने. काफी बढ़िया गेंद, सरप्राइज गेंद थी ये. अगली गेंद दोबारा सज्ज होते हुए अंश. Nicely bowled this time. Once again right on the off stump corridor. Wanted to drive it off the front foot. Just was a little bit lucky. Batsman. You can see the action replay. Nicely bowled. खेलना चाहते थे ऑन द अप पे, लेकिन गेंद सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मंथन की. अगली गेंद. This time nicely bowled once again. बार बार बल्ले को बीट करते हुए कॉन्फिडेंस मंथन ने बनाए रखा है. बहुत ही बढ़िया उम्दा श्रेणी की गेंदबाजी करते हुए मंथन. अंश थोड़े नाखुश जरूर होंगे अपने इस शॉट से. थोड़ी सी फुल नहीं थी ये गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट थी ये गेंद.
बैक फुट पे जाके मुझे लगता है खेलना चाहिए था, जबकि फ्रंट फुट पे आने की ज्यादा कोशिश कर रहे अंश। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी तरह जाल बूनते हुए फिलहाल अंश के लिए। जानते कि ऑप्शन के बाहर थोड़े से कमजोर नजर आ रहे फिलहाल अंश, तो उसी चैनल पे बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जी बिल्कुल मैसेज सीधा जाता हुआ, ऑप्शन से ज्यादा बाहर ना खेले, छोड़ दिए ऑप्शन के बाहर की गेंद तो ज्यादा बेटर होगा। अगली गेंद इसी के बीच में, क्या गेंद अंदर आएगी? और ये देखिए ये भी गेंद बाहर निकलते हुए, चौथी मर्तबा बीट किया है 5 गेंदों में। यह होता है हुनर। अंडर 14 के लेवल पे इतना बढ़िया समीकरण, लाइन और लेंथ का समीकरण जो बनाए रखा है, बहुत ही बढ़िया। देखिए चारों जो गेंदें हुई है इससे सभी बस बीट करते हुए विकेट कीपर के पास निकल गई है। एक आखिरी गेंद इस ओवर की, इस मर्तबा थोड़ी सी अंदर की तरफ आई है गेंद, लेकिन सज्जत अंश बेहतरीन तरीके से फ्लिक कर दिया है। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में 4 रनों के लिए। तालियों से स्वागत करते हुए इस चौके का। ओवर की हुई है समाप्ति। तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 11 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया ओवर ये किया था मंथन ने, लेकिन आखिर के गेंद में जब ऐसा लग ही रहा था कि गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आएगी या तो सीधी रहेगी, थोड़ी सी नीचे रही है गेंद, लेकिन उसका भरपूर फायदा उठाया अंश ने, कलाइयों के सहारे खेल दिया डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में 4 रनों के लिए। एक्शन पैक्ट ओवर ये रहा मंथन का, लेकिन अब दोबारा गेंदबाजी के लिए आएंगे अर्जुन। वो भी जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। उनका पहली मर्तबा इस ओवर में सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज। पहली गेंद काफी अच्छा डिफेंसिव शॉट खेल दिया, पॉइंट के क्षेत्र में कोई रन लेने का मौका नहीं। धीरे धीरे जैसे धूप खिलेगी मुझे लगता है विकेट काफी बढ़िया हो जाएगी बल्लेबाजी के लिए। थोड़ी सी धीमी गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं, थोड़ा मिश्रण का यहां पे उपयोग करते हुए अर्जुन। सन्मित स्ट्राइक एंड पे एक चौके की मदद से 5 रन पे बल्लेबाजी करते हुए, अंश बल्लेबाजी करते हुए 6 रन की निजी स्कोर पे। इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया फॉरवर्ड डिफेंस शॉट खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। बढ़िया लड़ाई अब देख रहे हैं दोनों ही अंडर 14 अंडर ट्रायल सिलेक्शन शताब्दी चषक 2024-25 के फिनाले में। अगली गेंद अर्जुन की, इस मर्तबा ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद, जाने दिया विकेट कीपर के पास। यूनियन क्रिकेट एकेडमी टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए, दोनों ही सलामी के बल्लेबाज सन्मित कोटमीरे और अर्जुन जादव और अंश नटवानी क्रीज पे डटे हुए। गेंदबाजी की कमान संभाले हुए अर्जुन जादव सनराइज स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन से। इस बार लेग स्टंप से थोड़ी बाहर ये गेंद, फ्लिक करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं बल्ले से, सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक आखिरी गेंद आनी शेष, चौथा ओवर समाप्ति के कगार पे। क्षेत्ररक्षण बहुत ही बढ़िया सजावट की गई है, एक स्लिप, साथ ही साथ एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट। इस मर्तबा
फ्रंट फुट पे आते हुए बढ़िया ड्राइव किया है, लेकिन सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथ में क्षेत्र में, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। चौथे ओवर की हुई है समाप्ति, 11 बिना किसी नुकसान किए। ओह, asking too many questions. This has been, I believe, this is the fifth delivery out of 7 deliveries wherein he has beaten the bat. ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ में मुकाबला चल रहा है उसी की झलकी यहाँ पे देखने मिल रही है। बार बार बैट को बीट करते हुए गेंद निकल रही है। इट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। एक चौका जरूर लगा है यहाँ पे मंथन को पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे, लेकिन काबिले तारीफ है गेंदबाजी। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी इस बार सक्षम तरीके के साथ खेल दिया कलायु के सहारे। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में बढ़िया क्षेत्र रक्षण, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भरा शॉट था। थोड़ी सी गेंद इस मर्तबा शॉट की थी, कुछ अलग करने का प्रयास किया था यहां पे मंथन ने। 4 गेंदे अभी भी यानी शेष। फुलर लेंथ गेंद करेंगे या मंथन अंदर लाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, इस मर्तबा वापस थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई ये गेंद। बढ़िया नियंत्रण दिखाया है। थोड़े जब आगे गेंदबाजी कर रहे हैं मंथन, शॉर्ट ऑफ लेंथ जब आप गेंदबाजी करते हो तो पेस आपके पास, गति आपके पास होना बहुत जरूरी है। काफी बढ़िया रोके रखा है फिलहाल तो बल्लेबाजों को। अगली गेंद दोबारा मंथन की, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अंश स्ट्राइक एंड पे। बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया फॉरवर्ड डिफेंस शॉट का मुजाहिरा पेश करते हुए इस बार कॉन्फिडेंस भरा शॉट आता हुआ अंश से। जज किया लेंथ को परफेक्टली और फ्रंट फुट पे आके डिफेंसिव शॉट खेलते हुए गेंद जाती हुई पॉइंट के क्षेत्र में। थोड़ी सी सीम मूवमेंट मुझे लगता है गेंदबाजों को नहीं मिल रही। यहां पे थोड़ा सा स्विंग का यहां पे प्रयास करना होगा गेंद को। बहुत ही बढ़िया गेंद, दोबारा बीट करते हुए अपील हुई है, लेकिन नकारा उस अपील को। छठी मर्तबा है मुझे लगता है पिछले 11 गेंदों में जब बीट करते हुए गेंद निकली है। एक आखिरी गेंद आनी शेष, क्या कुछ वेरिएशन यहां पे प्रदान करने की कोशिश करेंगे मंथन? बढ़िया गेंद इस मर्तबा, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई जरूर गेंद, लेकिन सज्ज थे काफी बढ़िया ढंग से फॉरवर्ड डिफेंस शॉट खेलते हुए शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में। ओवर की हुई है समाप्ति, दूसरा मेडन ओवर। लगातार 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 11 रन बिना किसी नुकसान के। आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड। अंश नथवानी 17 गेंदों का सामना कर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि सनमीत कोटमीरे 13 गेंदों का सामना करके एक चौके की मदद से 5 रन पे बल्लेबाजी करते हैं। दोबारा आएंगे ऑपोजिट एंड से अर्जुन, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक एंड पे होंगे सनमीत। काफी बाहर ये गेंद, थोड़ा ज्यादा समय दे रहे हैं मुझे लगता है गेंद को स्विंग होने का, लेकिन वो स्विंग यहां पे आज मुझे लगता है प्राप्त नहीं हो पा रही है अर्जुन को। लेकिन थोड़ा विकेटों में अगर गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि ऑस्टम से काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं और कोई रैश शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया है बल्लेबाजों ने, तो विकेट टू विकेट यहां पे गेंदबाजी करने की जरूरत है। इस मर्तबा फॉरवर्ड ढंग से खेल दिया है, काफी बेहतरीन ड्राइव था, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, वहां पे कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। नेक्स्ट डिलीवरी,
Short of line delivery just didn't rise at all. Luckily for the batsman, it was outside the off stump. जैसे कि मैं कह रहा हूं, जैसे कि पर्थ में भी जब भारतीय गेंदबाज अभी गेंदबाजी कर रहे हैं तो कभी गेंद की उछाल ज्यादा है, कभी वो नीचे रह रही है, तो यहाँ पे भी थोड़े से क्रैक्स है। आप मुझे लगता है उसी को देख रेख के देखिए, बाउंस ही नहीं हुई वो गेंद। अगर बीच में रहती तो मुझे लगता है काफी मुश्किलात में होते बल्लेबाज सनमित, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। ऑप्शन के बाहर थी वो गेंद। अगली गेंद इस बार ऑप्शन से काफी बाहर, ये गेंद आसानी के साथ जाने दिया विकेट कीपर के पास। 4 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, 2 गेंदें आनी शेष। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, लेकिन तकनीक का जो दिखाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी अच्छी। सन्मित खास करके अंश थोड़े से दुविधा में जरूर पाए गए हैं। इस बार फुलर लेंथी गेंद, थोड़ी बाहरी किनारा, गेंद गई गली के क्षेत्र में जहां पे क्षेत्र रक्षक तैनात। डॉट डिलीवरी दोबारा। छठा ओवर समाप्ति के कगार पे, एक आखिरी गेंद आनी शेष। आप देख रहे हैं फिनाले का मुकाबला शताब्दी चषक सीजन 2 अंडर 14 ट्रायल्स के यूनियन क्रिकेट एकेडमी बनाम सनराइज स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन। यूनियन क्रिकेट एकेडमी, they have won the toss, they are batting first. Sunmeet on strike. This time once again a forward defensive shot. The coach is quite happy out there with both the batsmen. They are showing good footwork movement and good defensive shots. जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं लाइव अंडर 14 ट्रायल्स के सिलेक्शन के मुकाबले, शताब्दी चषक के फिनाले का मुकाबला लाइव ऑन CricYard.in। तो प्लीज फॉर ऑल द अपडेट्स यू कैन गो टू स्पोर्ट्स माई सोल Instagram ID and you can just check all the highlights and all the updates regarding this finale. Manthan coming on to bowl his 4th over. Just a widest delivery, went straight to the wicket keeper. This time nicely drove of the front foot down to the backward point region. The fielder is going after that ball, but in vain. That's the second boundary of Ansh. A good hit by Ansh. बहुत ही बढ़िया हिट, कॉन्फिडेंस भरा शॉट इस मर्तबा। ज्यादा ही आगे कर दी थी इस बार गेंद मंथन ने। हालांकि गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन क्षेत्र रक्षक से काफी दूर। स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पे। 14 गेंदों के बाद पहला रन आया है यहां पे बल्ले से। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस मर्तबा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। It has been a good spell from Manthan. This is the 4th over. Definitely थोड़ा सा थके होंगे क्योंकि पहले 2 ओवर में काफी बढ़िया ढंग से नियंत्रण दिखाया है। इस बार थोड़े से मुझे लगता है ऑप्शन से बाहर डाल रहे हैं और थोड़ा ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब तक कोई विकेट की प्राप्ति नहीं हुई है। बढ़िया गेंद इस मर्तबा, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, लेकिन बहुत ही बढ़िया ढंग से गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और ये दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर में और इस पारी का चौथा चौका। थोड़े से वीक जरूर नजर आए जब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हो,
लेकिन जब भी आप विकेट में गेंदबाजी करें, विकेटों पे गेंदबाजी करें, यहाँ पे ऑन साइड पे, तो बहुत ही स्ट्रांग नजर आए हैं अंश। देखिए एक्शन रिप्ले, बहुत ही बढ़िया फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट था, सीधा गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। अगली गेंद इस मरतबा ऑप्शन से बाहर थी, ये गेंद बहुत ही बढ़िया ढंग से जज किया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद बची इस ओवर की। बढ़िया ओवर ये रहा है फिलहाल यूनियन क्रिकेट एकेडमी के लिए। 8 रन अब तक आए हैं इस ओवर में। 2 चौके लगाए, एक बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में और एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। बढ़िया गेंद इस मरतबा। ओवर की हुई है समाप्ति। 7वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 बिना किसी नुकसान के। अर्जुन दोबारा चौथी ओवर लेके, सनमित स्ट्राइक एंड पे। लेग स्टंप से थोड़ी बाहर ये गेंद, सीधा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर है, लेकिन पिछले ओवर में थोड़ी सी तेजी के साथ रन बटोरे अंश ने। 8 रन जमाए 2 चौकों की बदौलत। अर्जुन को विकेटों पे मुझे लगता है ज्यादा फोकस करना होगा। अगली गेंद इसी के बीच में, इस बार ऑप्शन से बाहर हल्के हाथों से खेल दिया इसको पॉइंट के क्षेत्र में। सनमीत कोटमीरे ऑन स्ट्राइक एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। अंश नटवानी बैटिंग ब्रिलियंटली एट 14 रन्स। बाहरी किनारा, लेकिन गेंद निकल गई स्लिप और गली के बीच में से 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद थी इस मर्तबा। जैसे कि हमने कहा कि काफी धीमी तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन, और स्विंग कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसका ही फायदा इस मर्तबा जरूर मिला था। मुझे लगता अगर सेकंड, जैसे कि आप देख रहे हैं पोजीशन सेकंड स्लिप ऑलरेडी है, थर्ड स्लिप में अगर कोई क्षेत्र रक्षक होता तो कैच लेने का मौका जरूर बनता। जबकि एक गली और अभी भी सेकंड स्लिप पे जो तैनात है, अभी भी फील्ड की सजावट वैसे ही दिख रही है। इस मर्तबा हल्के हाथों से इसको डिफेंड किया। मानना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया डिफेंस दिखाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़िया फुट मूवमेंट दिखाई है। अगली गेंद दोबारा अर्जुन की। 2 गेंदें अभी भी आनी शेष। बहुत ही बढ़िया गेंद, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई इस मर्तबा गेंद, लेकिन भली भांति जानते थे सनमित, हल्के हाथों से खेल दिया बैक टू द बॉलर। एक आखिरी गेंद आनी शेष। 8वां ओवर समाप्ति के कगार पे। स्कोरबोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी नीचे की तरफ रही, फ्रंट फुट पे जाके इसको ड्राइव कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। 8वें ओवर की हुई है समाप्ति। 23 ऑन द बोर्ड फॉर नो लॉस।
हालांकि हम बात कर रहे थे जो कि पर्थ में मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के बीच में, एक बढ़िया टारगेट का चेस कर रहे हैं। 534 मुझे लगता है फिलहाल लंच लिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी खस्ता हालत है। 104 पे 5 विकेट गिरे हैं, तो 3 विकेट चटकाए हैं सिराज ने और 2 विकेट चटकाए हैं बुमराह इन्होंने। तो जीत तो लगभग तय है, आधा रास्ता तो भारतीयों ने तय कर लिया है। देखते हैं और 5 विकेट कब तक ले पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। एक बड़ी जीत होगी। उसी के बीच आप देख रहे हैं फिनाले का मुकाबला। अगली गेंद इसी के बीच में बढ़िया ढंग से एक फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेला, कलाई के सहारे उसको मोड़ दिया थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में, लेकिन कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। 5वां ओवर लेके आए हैं मंथन, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दोबारा लगातार बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। पिछले ओवर में जरूर 2 चौके आए थे, लेकिन बढ़िया नियंत्रण दिखाया है मंथन ने। अगली गेंद इसी के बीच में अंश स्ट्राइक एंड पे, बढ़िया शॉट यहां पे, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण। थोड़ी सी बैट बाउंस जरूर हुई थी उस गेंद में, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे जो क्षेत्र रक्षक है बढ़िया ढंग से उन्होंने रोका उस गेंद को। कोशिश कर रहे हैं ऑफ द डेक थोड़ी सी गेंद अंदर आए, लेकिन बहुत ही बढ़िया पिच है। अगर सामने आएगी गेंद तो जरूर बल्ले के बीचों बीच लगेगी, तो अगर गैप मिली तो गेंद जाएगी चौके के लिए। अगली गेंद इस बार बढ़िया ढंग से खेलते हुए, बढ़िया गेंदबाजी चल रही है, लेकिन उतनी बढ़िया तकनीक दिखाते हुए बल्लेबाज। Still 3 deliveries to go in this over. Just can feel something is going to happen because आजकल का जो क्रिकेट है थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट होता है, तो जरूर बल्लेबाज भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बने। अगली गेंद मंथन की, शॉर्ट ऑफ लेंडी डिलीवरी, हल्के हाथों से खेल दिया इसको बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। दोबारा डॉट डिलीवरी। स्कोर अभी भी थमा हुआ है 23 बिना किसी नुकसान के। सभी अपडेट्स के लिए अगर आप YouTube चैनल पे डायरेक्टली नहीं जा सकते तो प्लीज इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा स्पोर्ट्स माई सोल, जहां पे हर एक अपडेट इस फिनाले का आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद, 1 रन चुराने की कोशिश और सफल रहे हैं यहां पे बल्लेबाज। थोड़ा सा वेवर्ड थ्रो था, सीधा जाके पीठ पे लगी है, लेकिन ठीक है वहां पे बल्लेबाज। प्लीज पानी लेके जाइएगा, स्प्रे और पानी प्लीज। थोड़ा सा विराम लेते हैं। फिलहाल सब ठीक है यहाँ पे, जो भी दर्शक लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं CricYard.in के माध्यम से। एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक ले लेते हैं उसी के बीच में। तब तक मजा लेते हैं हाइलाइट्स का जो अब तक खेल हुआ है। बढ़िया गेंदबाजी चल रही है, उसी के बीच में बढ़िया हिट्स भी कुछ लगाए। बढ़िया गेंद, ये देखिए ऑप्शन के बाहर। सनमीत स्ट्राइक एंड में थे, अर्जुन गेंदबाजी कर रहे थे और बढ़िया ड्राइव यहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। देखिए आप देख सकते हैं पहला चौका इस फिनाले का। इस मर्तबा देखिए बार बार ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी करते हुए बीट किया है अंश को, लेकिन जब मौका मिला कलाई के सारे, क्या बेहतरीन हिट मोहम्मद अजरुद्दीन जी की याद दिला दी। इस बड़े कलाई का सहारा कितने बढ़िया ढंग से किया है यहाँ पे अंश ने। पहला चौका उनके बल्ले से आया था, उसके बाद दोबारा बीट किया यहाँ पे। फिर उसके बाद जब सनमीत स्ट्राइक एंड पे थे, काफी नीचे रही थी ये गेंद।
दोबारा एक्शन की तरफ बढ़ते हुए, एक आखिरी गेंद बची है, सनमित स्ट्राइक एंड पे। बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर की हुई है समाप्ति, 9th ओवर एंड स्टिल 24 फॉर नो लॉस। के लिए 5वां ओवर लेके सामना करेंगे अंश। दोनों ही बल्लेबाज अब काफी सेट नजर आते हुए। क्षेत्ररक्षण बढ़िया ढंग से सजी है। एक का फर्स्ट स्लिप इस मर्तबा और एक थर्ड स्लिप तैनात किया गया है। बढ़िया गेंद इस मर्तबा ऑप्शन से बाहर, मुझे लगता है थोड़ा सा इनडिसिसिव रहे हैं अंश। ऑप्शन के बाहर जब भी गेंद गई है, छेड़खानी करने की कोशिश की है अंश ने। अगली गेंद इसी के बीच में, बढ़िया गेंद थी और बढ़िया ढंग से इस बार गाइड कर दिया। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ। ऐसा लग रहा था मानो गेंद निकल जाएगी गैप में से 4 रनों के लिए, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे जो क्षेत्र रक्षक थे बढ़िया ढंग से झोंक दिया अपने आप को। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, मात्र 1 रन जुड़ा खाते में। स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पे। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, काफी अच्छा नियंत्रण फिलहाल तो अर्जुन दिखाते हुए। पहले 2 ओवर में थोड़ा समय जरूर लगा क्योंकि ऑप्शंस के बाहर काफी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए। सन्मित अब आते हुए स्ट्राइक एंड पे। बढ़िया गेंद, दोबारा फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट। ये शॉट काफी देखने मिलेगा आज पूरे दिन में, क्योंकि ओवर की कोई सीमा नहीं है। 2 पारी के बीच में ये मुकाबला होगा, कौन जीतेगा फिनाले। विकेट विकेट और विकेट ही आपको चटकाने हैं। कौन होगा वो गेंदबाज जो चटकाएगा विकेट्स। विकेट की तलाश में फिलहाल तो अर्जुन। बढ़िया गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा जरूर किया है विकेट कीपर ने। अगली गेंद इसी के बीच में अर्जुन की, दोबारा राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। ऑप्शन से काफी भारी है गेंद, कोई छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की सन्मीत ने। अब देख रहे हैं शताब्दी चषक अंडर 14 ट्रायल्स के सिलेक्शंस, फिनाले का मुकाबला। दोनों ही टीम जद्दोजहद करते हुए यहां तक का रास्ता तय कर चुकी है। अगली गेंद बढ़िया ढंग से कलाई के सारे खेल दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र में थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में इस बार गड़बड़ी नजर आई पहली मर्तबा। 2 रन यहां पे अर्जित किए बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पे, जबकि 10 ओवर की हुई है समाप्ति। 2.7 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल यूनियन क्रिकेट एकेडमी के बल्लेबाज। देखते हैं कोई बॉलिंग में बदल आपको नजर आएगी, नहीं फिलहाल तो मंथन ही नजर आ रहे हैं अपने बॉलिंग लाइनअप पे, बॉलिंग रनअप पे। अंश बल्लेबाजी करते हुए 16 रन पे,
31 गेंदों का सामना किया, जबकि संमित बल्लेबाजी करते हुए 11 रन पे, जबकि उन्होंने 30 गेंदों का सामना किया है। मंथन छठा ओवर लेके शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रही, थोड़ी सी नीचे रही ये गेंद, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में, ऑफ स्टंप के बाहर थी। कोई छेड़खानी फिलहाल अंश ने नहीं किया, जबकि पिछले ओवर में देखा था कट करने की कोशिश की थी बैकफुट से। सही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फिलहाल अंश अब नजर आते हुए। Nicely bowled this time. Takes outside end of the bat. Goes down to the third man region. Definitely it will go down to the boundary lines. Definitely. Boundary being signaled by the umpire. That's the fourth boundary from Ansh. बढ़िया गेंद थी, बाहरी किनारा लगा था, लेकिन इतने सॉफ्ट हाथों से खेला था कि गेंद बाहरी किनारा लगने के बाद नीचे जा गई और थर्डमैन के क्षेत्र में चौका अर्जित किया। चौथा चौका आता हुआ अंश के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा है 31 रनों पे। 31 रन्स ऑन द बोर्ड। मंथन की अगली गेंद, बढ़िया गेंद, दोबारा बढ़िया फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट अंश द्वारा। हर एक गेंद के बाद जैसे जैसे समय जा रहा है, अंश की बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस नजर आता हुआ, फुट मूवमेंट में कॉन्फिडेंस नजर आता हुआ, सही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। देखिए पिछली गेंद भी बहुत बढ़िया ढंग से फ्रंट फुट पे आके फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेला था। अगली गेंद देखिए, दोबारा क्या मुजाहरा है बल्लेबाजी का, बहुत ही बढ़िया सही तकनीक के साथ। जो उनका बेस लेवल जो है वो काफी स्ट्रांग है, ये नजर आता हुआ अब। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की भी, काफी अच्छा समीकरण लाइन और लेंथ के बीच में रखा है। एक आखिरी गेंद जरूर है, मंथन थोड़े से खर्चीले जरूर हुए हैं, 19 रन आए हैं, लेकिन ज्यादा विकेट लेने के सक्षम लगे हैं। अगली गेंद दोबारा एक फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, ओवर की हुई है समाप्ति। एक आखिरी गेंद, आई बिलीव 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आनी शेष है। अंपायर का इशारा है नो बॉल का। बॉल काउंट है, रुक गए थोड़े से यहां पे बल्लेबाज। चार गेंदें हो चुकी है, उसके बाद एक फ्रंट फुट नो बॉल घोषित किया था अंपायर ने। 2 गेंदें अभी भी आनी शेष, स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पे। 32 रन्स ऑन द बोर्ड। गुड स्टार्ट फ्रॉम यूनियन क्रिकेट एकेडमी without losing any wicket. Nicely bowled this time. Yorkland delivery. Ansh was awake and put the bat at the right moment. Last delivery to go in the 11th over. Just the run rate was at the end of the 10th over 2.7. It's just clicking up till 3. This time nicely played off the front foot, nicely drived that delivery straight to the mid-on fieldsman. So at the end of the 11th over, it's 32 on the board.
Just a slight delay. I believe a closing fieldsman we are going to see, because there is a change in the bowling. I believe for the first time it will be Jay Thakkar coming on to bowl. Jay Thakkar, off spinner. You can see a silly point now being placed. Very good start from Jay. There would be some cracks in the pitch out there, and which Jay would think he will get assist from that. काफी टॉस किया था इस गेंद को, अब पिछली खेल दिया है कवर्स के क्षेत्र में, याता हुआ दूसरा चौका सनमित के बल्ले से। स्कोर जाता हुआ 36 रनों पे, 36 रन्स ऑन द बोर्ड। फुल टॉस में कन्वर्ट किया उस गेंद को। फुल टॉस में उस गेंद को बढ़िया ढंग से खेल दिया और 3 रन दौड़ते हुए मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा है 39 रनों पे, 39 रन्स ऑन द बोर्ड। 3 गेंदें अभी भी आनी शेष बैटिंग क्रीज मार्क करते हुए, क्योंकि पहली मर्तबा स्पिनर का सामना करेंगे अंश, जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं 20 रनों पे। अगली गेंद जय की, राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद इस मर्तबा बैकफुट पे जाके शॉट खेलते हुए पॉइंट के क्षेत्र में। दो गेंदें अभी भी आनी शेष। थोड़ा खर्चीला ये ओवर साबित होता हुआ जय का। 7 रन अब तक आए हैं इस ओवर से। बढ़िया गेंद इस मर्तबा, दोबारा एक डिफेंसिव हिट। काफी फ्लाइट देते हैं जय अपनी गेंदों पे। ऑफ द पिच सहायता लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये, काफी बढ़िया ढंग से सम्मानजनक शॉट खेलते हुए ओवर की हुई है समाप्ति। 12 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 39 रनों पे। अंश बल्लेबाजी करते हुए 20 रनों पे 40 गेंदों का सामना किया है, जबकि सनमित ने बनाया है 18 रन 33 गेंदों का सामना किया है। ऑपोजिट एंड से जरूर बदल हुआ है गेंदबाजी क्रमांक में, और हमारे एंड से भी स्पोर्टिंग एकेडमी के एंड से गेंदबाजी करने आए हैं नए गेंदबाज। अद्वैत, कैप्टन है ना, अद्वैत आए हैं गेंदबाजी के लिए, स्वयं कप्तान सनराइज स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट पहली मर्तबा जाते हुए सनमित स्ट्राइक एंड पे आते हुए। क्षेत्र रक्षण में आप देख सकते हैं थोड़ी सी तब्दीली। अब देख रहे हैं एक डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग तैनात किया गया है। पहली गेंद बढ़िया ढंग से फ्रंट फुट ड्राइव कर दिया है, इसको कवर्स के क्षेत्र में रन लेने की गुंजाइश नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत करते हुए अद्वैत। बढ़िया गेंद इस मर्तबा,
ज्यादा लूप दिया था इस गेंद को, बहुत ही बढ़िया ढंग से, लेकिन सनमित ने सम्मान दिया गेंद को। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया ढंग से ड्राइव किया इसको, थोड़ी सी खराब क्षेत्र रक्षण के चलते गेंद जा रही है कवर्स के क्षेत्र में, डीप एक्स्ट्रा कवर में। 2 रन जरूर अर्जित किए यहां पे इन 2 रनों की बदौलत। स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पे, 41 रन्स without any loss. This has been a good start. Solid foundation being laid by both the batsmen of Union Cricket Academy. Once again, Advait. Nicely bowled this time. Nicely played. Both the batsmen showing great skills. Sanmit Kotmire and Ansh Nathwani. 2 deliveries left in this over. This time rocks on the back foot, cuts it down to the deep backward point region, and definitely will this be a boundary? Yes, that's the 3rd boundary from Sanmeet. Nicely played. You can watch the action replay. Just gave the ball too much time to spin, and then at the last moment played it nicely down to the backward point region. It was a good chase from the fieldsman over there, but in vain at the last moment. One last delivery to go in this over. 45 runs on the board for Union Cricket Academy. This time nicely bowled, nicely played. That's the over. So at the end of the 13th over, it's 45 runs on the board. Union Cricket Academy, they are going at round about 3.46 runs per over. At the end, the 10th over, they were at 27. Now at the end of 13th over, they are at 45 runs. Definitely from the past 3 overs, there has been some aggression shown by the batsmen for the spinners. Once again, Jai Thakkar will continue from the opposition end. Right arm over the wicket. Ansh Nathwani will be on strike. A silly forward short leg in place this time. Nicely bowled. Nicely rocked on the bat foot. Played nicely. Showing the face of the bat. Down to the cover region. This time quite an effort, appeal, but I believe that was going down the leg side. Definitely the batsman was trying to play on the onside. Nicely bowled this time from Jai. Once again a good solid forward defense. Shot down to the mid-off region. Still 3 deliveries to go in this over. Can't see anything happening off the pitch. This time nicely bowled. 14th over in progress. Everyone who are watching us back at home, this is the finale of under 14 trials Shatabdi Chashak season 2. A nice fielding position. You can see a backward point being placed, deep backward point, and a deep mid-wicket fieldsman on the boundary lines. Gave a little bit of air, but a very good solid defensive shot by Ansh. Good competition between both the bat and the ball. Nicely bowled once again.
That's the end of the over. That's the end of the 14th over. 45 on the board for team Union Cricket Academy. Advait coming on to bowl his second over. Nicely played off the front foot, and that's the boundary, fourth boundary of Sanmit bat. कदमों का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया ढंग से उस गेंद को स्पिन होने नहीं दिया और कलाई के सहारे मोड़ दिया डीप काउ कॉर्नर एरिया में 4 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत इस ओवर की कराते हुए सनमीत बल्लेबाजी कर रहे अपने निजी 28 रन पे, टीम का स्कोर 49 रन। इस बार फ्रंट फुट पे आके ड्राइव करने की कोशिश, अगली गेंद बढ़िया ढंग से ड्राइव कर दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में। फुटवर्क का काफी अच्छा नजर आया है सनमीत का, चार्ज किया है गेंदबाजों को। बढ़िया गेंद है इस मर्तबा, दोबारा एक रन चुराने की कोशिश जरूर इसमें सफल रहे इस मर्तबा, एंड 50 अप फॉर यूनियन क्रिकेट एकेडमी। इट हैज बीन अ गुड स्टार्ट, good solid foundation being laid by both the opening pair. 50 runs on the board. Sanmeet batting brilliantly at 29 and Ansh batting at 20 runs. दो गेंदें आनी शेष। अद्वैत की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस मर्तबा, बढ़िया ढंग से सम्मानजनक शॉट खेलते हुए अंश। एक आखिरी गेंद आनी शेष 15वें ओवर की, इसके बाद थोड़ा सा विराम लेंगे, ड्रिंक्स ब्रेक होगा। बहुत ही बढ़िया खेल पट्टी का यहाँ पे चुनाव किया गया है। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से इसको ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। 15 ओवर के समाप्ति के बाद यूनियन क्रिकेट एकेडमी पहुंची है 50 रन बिना किसी नुकसान के। विल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल, विल टेक अ शॉर्ट ड्रिंक ब्रेक। Till then, you can watch the highlights of this inning. सीधा सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं अंडर 14 सिलेक्शन ट्रायल्स के शताब्दी चषक सीजन 2 अंडर 14 CricYard.in के माध्यम से, और लाइव अपडेट्स के लिए आप प्लीज फॉलो कीजिएगा स्पोर्ट्स माई सोल इंस्टाग्राम आईडी को। हर एक अपडेट्स आपको मिलेंगे इस फिनाले के, और साथ ही साथ जो 29 नवंबर से शुरुआत होने वाला है लेट अर्जुन मडवी वुमेन्स चैंपियनशिप, उसके भी अपडेट्स वहां पे आपको मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ आप देख रहे हैं हाइलाइट्स पैकेज पहली पारी की।
On strike it will be Sanmit. You're watching Sporting Central Club Thane Shatabdi Chashak Under 14 Selection Cricket Tournament 2024-25 organized by Sporting Club Committee Thane. A beautiful ground in Thane. This time a beautiful shot of the front foot by Sanmit will be his fifth boundary. We'll just wait for the umpire's signal. Just a couple of runs, I believe at the end moment the ball stopped before going to the boundary cushions. So couple of runs being stolen by the batsman. Score moves on to 52. Sanmit batting brilliantly on 31 runs, have faced 45 deliveries. Ansh batting brilliantly on 20 runs, have faced 48 deliveries. This time off the back foot, flicked just to the short mid-wicket region. This time solidly defended once again by Sanmit. I believe Jay will have to up the ante. His line and length I believe is perfect. Just a little bit more pace on that delivery. Extra pace. This time rolled his race over. Nicely fielded. Outstanding fielding. That from the short cover fieldsman. That was a good delivery and a very good drive by the batsman, but nicely fielded. This time I believe a wrong one, because this time it came a little bit inside. At the end of the 16th over is 52 on the board. अब तक मुझे लगता है जितना टर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्पिन गेंदबाज, उतनी टर्न मिली नहीं है। बल्लेबाजों ने काफी बढ़िया तकनीकी के साथ आसानी के साथ खेलने का प्रयास यहाँ पे किया है। अद्वैत अपना तीसरा ओवर लेके आएंगे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाएंगे, पहली मर्तबा सामना करेंगे अंश। एक सिली पॉइंट तैनात किया गया है, एक स्लिप तैनात है, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर्स में क्षेत्ररक्षक तैनात, एक बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक डीप मिड विकेट। बढ़िया गेंद। फिलहाल तो बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा दोनों ही बल्लेबाज करते हुए, कोई जोखिम नहीं उठा रहे यहाँ पे। इस मर्तबा बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। अंडर 14 सिलेक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 आप देख रहे फिनाले स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब थाने शताब्दी चषक। इस मर्तबा फ्रंट फुट पे आके बढ़िया ढंग से ड्राइव किया है, मिड ऑफ के क्षेत्र रक्षक वहां पे तैनात, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। पिछले कुछ गेंद अंश के मुझे लगता है करीब करीब 12 से 14 गेंद हुए, जबकि कोई भी रन आया नहीं है अंश के बल्ले से। इस बार ऊपरी तरीके से खेल दिया था, लेकिन भाग्य ने दोबारा साथ दिया, थोड़े से दूर रहे शॉर्ट कवर के क्षेत्ररक्षक से गेंद। एक शैकल अपने आप में क्रिएट किया है, वो तोड़ना चाहते हैं उस शैकल को। बढ़िया गेंदबाजी रही है, अब तक अंश को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया है। अगली गेंद इस मर्तबा हवाई फायर, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और इस मर्तबा आता हुआ चौका अंश के बल्ले से। जी जैसे कि हम कह रहे थे कि पिछले कुछ 12-14 गेंदों में अंश के बल्ले से रन नहीं आई, लेकिन इस मर्तबा कॉन्फिडेंस बढ़िया हिट, काफी एयर दिया था, इस गेंद को लूप दिया था तो सीधा सीधा खेल दिया गेंदबाज के पीछे 4 रनों के लिए। स्कोर जहां पहुंचा है 56 रनों पे, 56 रन्स ऑन द बोर्ड। अगली गेंद इस मर्तबा दोबारा एक बढ़िया फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए
ओवर की हुई है समाप्ति 56 बिना किसी नुकसान के। दोबारा गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं जय ठक्कर। चौथा ओवर लेके काफी अच्छा नियंत्रण दिखा है जय ने अपने गेंदबाजी पे। सन्मित स्ट्राइक एंड पे एक सिली पॉइंट तैनात, दबाव बनाने की कोशिश। बढ़िया गेंद, बढ़िया ढंग से फ्रंट फुट पे आके ड्राइव किया। थोड़ा सा यहाँ पे हड़बड़ाहट में नॉन स्ट्राइकर एंड पे अंश एक रन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पष्ट थे सन्मित, नकारा उस एक रन को। सही निर्णय, कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, जबकि नया बॉल देख चुके हैं और अब थोड़ी सी जैसे जैसे ओवर जाएंगी बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, खेलने के लिए आसान और होगा यहाँ पे मुझे लगता है। इकतीस रन पे बल्लेबाजी करते हुए सन्मित कोटमीरे और अंश नथवानी बल्लेबाजी करते हुए 24 रनों पे। अगली गेंद बढ़िया ढंग से फ्रंट फुट पे आके ड्राइव कर दिया है। एक्स्ट्रा कवर पे क्षेत्र रक्षक तैनात, एक रन यहां पे अर्जित किया बल्लेबाजों ने। सत्तावन रन स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगता हुआ। 3 गेंदें अभी भी आनी शेष। अब अंश आते हुए स्ट्राइक एंड पे। क्या रणनीति होगी अंश की? पिछले ओवर में एक चौका जड़ा था। बढ़िया गेंद इस मर्तबा दोबारा बढ़िया तकनीक के साथ फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए। अब देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, सही तकनीक के साथ देखिए पैर और बल्ला दोनों एक साथ और जाते हुए। अगली गेंद इसी के बीच में बढ़िया ढंग से ड्राइव किया इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। एक आखिरी गेंद आनी शेष। बढ़िया गेंद थी, बढ़िया हिट, सीधा शॉट कवर क्षेत्र में। ओवर की हुई है समाप्ति 57 बिना किसी नुकसान के। जो भी लाइव अपडेट्स आप देखते हैं स्पोर्ट्स माई सोल इंस्टाग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा। हर एक का 15 ओवर के बाद आपको स्कोर्स वहां पे अपडेट्स, लाइव अपडेट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉस का भी आंखों देखा हाल आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ कुछ जो हम बाइट्स ले रहे हैं सभी हमारे खिलाड़ियों के, वहां पे आपको लाइव अपडेट्स फीड्स मिलेंगे। अगली गेंद इसी के बीच में अद्वैत अपनी 5वीं ओवर लेके आए हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत करते हुए काफी हवा दी उस गेंद को, काफी लूप दिया उस गेंद को, हल्के ढंग से खेल दिया सन्मित ने बैक टू द बॉलर। दोबारा सज्ज होते हुए कदमों का इस्तेमाल, इस बार गेंद हवा में और क्षेत्र रक्षक से दूर। बढ़िया गेंद थी, लेकिन क्षेत्र रक्षक मुझे लगता है ज्यादा कोशिश नहीं की, काफी दूर थी मुझे लगता है गेंद। बैकफुट पर जाके इस बार कट किया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे, एक ही रन से संतुष्टि जताई। बढ़िया थ्रो सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस एक रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 58 रनों पे। 3 गेंदें आनी शेष। बढ़िया गेंद इस मर्तबा, थोड़ी सी घूमी ये गेंद, लेकिन बढ़िया तकनीक के साथ डिफेंड किया इस गेंद को। 2 deliveries to go in this over. Nicely bowled this time. Just fox the batsman. काफी निचला हिस्सा लगा मुझे लगता है बल्ले का, बाल बाल बच गए यहाँ पे बल्लेबाज। बढ़िया गेंद थी अद्वैत की,
देखिए एक्शन रिप्ले उस गेंद का, चकमा दे गए थे बल्लेबाज को, थोड़ी सी घूमी गेंद अंदर की तरफ आई, विकेट के ऊपर से निकल गई। अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की, बढ़िया गेंद यहाँ पे, बढ़िया लय में अब नजर आते हुए अद्वैत। ओवर की हुई है समाप्ति फिलहाल तो 19वें ओवर के समाप्ति के बाद 58 बिना किसी नुकसान के। प्रयास बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे सनराइज स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के गेंदबाज, लेकिन उतनी सफलता फिलहाल तो हासिल नहीं हो पा रही। बढ़िया तकनीकी के साथ यहाँ पे दोनों ही सलामी के बल्लेबाज डटे हुए यूनियन क्रिकेट एकेडमी के। दोबारा आते हुए गेंदबाजी के लिए जय ठक्कर। बढ़िया गेंद, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट दोबारा। तकनीक की जब हम बात करते हैं, खास करके सनमीत ने बहुत ही बढ़िया तकनीक का दिखाई है। बाएं हाथ के बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है। इस मर्तबा कलाई के सारे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, क्षेत्र रक्षक तैनात है वहां पे। एक रन जरूर अर्जित किया यहाँ पे। इस एक रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 59 रनों पे। 59 runs on the board. This is the 20th over of this inning. Ansh once again coming back on strike. 4 deliveries to go. This is nicely bowled. Fox the batsman. That's the first wicket down. Lack in concentration and the off stump goes peddling. Ansh is back in the hut, but a very good start from Ansh for his team. Seen the new ball off, but this has been a very, very good delivery from Jay Thakkar. Ansh going back to the pavilion. A new batsman coming in. Saurav Sinha, the captain himself of Union Cricket Academy. Saurav Sinha. Ansh started off brilliantly with 3 4s, but then got himself into shackle, and definitely in the previous over a boundary was hit by him, but after that once again Jay got a better of him. Nicely bowled by Jay. The first wicket down for Union Cricket Academy. Saurav, the new batsman, the captain himself, just marking his crease. जस्ट अब थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आएगा अब सनराइज स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के खिलाड़ियों में। पहला विकेट चटका चुके, काफी समय के बाद ये विकेट गिरा है क्योंकि 20वां ओवर है इस पारी का। सौरव स्ट्राइक एंड पे, दोबारा जय, राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद इस मर्तबा, जाने दिया गेंदबाजों के हाथ में। सभी हमारे डिग्निटरीज यहाँ पे स्कोरबोर्ड एंड पे आप देख सकते हैं, धुमाल सर, साथ ही साथ महापुष्कर सर। बढ़िया गेंद इस बार बैकफुट पे जाके इसको खेल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे। इस एक रन से अपना खाता खोलते हुए सौरव, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 रनों पे। स्ट्राइक एंड पे दोबारा आते हुए सनमीत, साथ ही साथ सचिन गोरिवले भी यहां पे स्कोर कार्ड एंड पे। सभी डिग्निटरीज। अगली गेंद बढ़िया ढंग से खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। एक रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। 61 runs on the board at the end of 20 overs. They're going at 3.05 runs per over.
Definitely, we have one of the coaches of MK Academy, Milind Kajrolkar sir, is also on the score boundaries. Dhumal sir. Next delivery from Advait. Nicely bowled on the stump corridor. Brilliant batting display it has been from Sanmeet. This time nicely played off the back foot once again, straight down to the mid-off region. Advait this time showing a lot of control out there in the middle. Nicely played once again off the front foot. Nicely fielded by Jay Thakur over there. But a single stolen by the batsman. A good communication between both the batsmen. 3 deliveries still to go in this over. 62 runs on the board for the loss of 1 wicket. A good stand between both the opening pair, Ansh and Sanmeet. The new batsman in, Saurav, the captain of the side, Union Cricket Academy. He has just opened his account, just marking his crease once again from that opposition end. Advait once again going left arm around the wicket. Nicely bowled. Nicely bowled. Just spun a little bit and went straight to the wicket keeper. That was a very, very good delivery. Nicely bowled this time. Not giving any pace to both the deliveries. Tempting the batsman to go for a big hit. Definitely know that Saurav will show his aggression. This time this is up in the air. Played nicely down to the long off region. And the first boundary of Saurav's inning. With the end of the 21st over, it's 66 on the board for the loss of 1 wicket. Definitely we can see all the dignitaries at the scoreboard end. Dhumal sir, Mahapuskar sir, Sachin Goruleji, all have been a great stalwarts of this sporting academy. Thane, you're watching the Shatabdi Chashak. This is the season 2 of under 14 selection cricket tournament 2024-25. Once again Jai Thakkar nicely bowled this time right on the off stump corridor. Played nicely by Sanmeet. Nicely bowled as again and nicely played. Not giving any room to Sanmeet. This has been a good spell from Jai Thakkar, I must say. This time goes down the track, off the front foot, played nicely down to the extra cover region. A slight fielding error by the batsman. Just a couple of runs. A wideish throw, but no harm done. Score moves on to 68. A solid foundation being laid by both the opening pair, Ansh and Sanmeet. Definitely it will benefit the whole team. Nicely bowled this time once again. Nicely played by Sanmeet, with lot of class shown by Sanmeet off the front foot, going down the track, off the back foot. He has been all over. Gave it a little bit more air. Nicely drived down to the cover region.
just for a single this time. Gaining some confidence, ball by ball, Sanmeet is batting brilliantly on 39, just faced 66 deliveries. Last delivery of the 22nd over. Saurav will be on strike. Just shown some aggression in the last delivery of the previous over. Nicely bowled this time. Appeal, but neglected by the umpire. A very, very good delivery by Jai Thakkar. A nice end to this over. So at the end of the 22nd over, it's 69 on the board for 1 wicket for Union Cricket Academy. You can see the action replay of the last delivery of the previous over. Quite nicely bowled. A wrong one, I believe. Advait coming on to bowl the next over. Nice delivery once again. A flighted delivery. Played nicely once again by Sanmeet. 69 for 1. Will be targeting, I believe, not less than 250 runs here. Quite a good track. Nicely goes down the track. Nicely played defensively, and there was a slight miscommunication between both the batsmen, but a sloppy fielding by Jay over there, and a single stolen by the batsman. 70 runs on the board for the loss of 1 wicket. Once again, Advait going left arm round the wicket. Saurav, the captain, will be on strike. Nicely bowled, nicely rocked on the back foot, nicely defended by Saurav. Saurav has just come onto the crease, faced 7 deliveries, a nice boundary down to the long off region. This is nicely played down to the mid off region, nicely fielded by the fieldsman over there, but couldn't stop the batsman from taking a single over there. A good start for Union Cricket Academy. This is the finale. Nicely bowled this time. Last delivery of this over. I believe this is the 6th over of Advait's spell. This time rocks on the bat foot. Square cut it nicely down to the backward point region just for a single. So at the end of the 23rd over, it's 72 on the board for the loss of 1 wicket. Sanmeet batting brilliantly on 41 and Saurav giving him assistance at 6. This has been a good start for Union Cricket Academy. Just 1 wicket lost and 72 runs on the board. You're watching Sporting Cricket Club Thane Shatabdi Chashak Under 14 Selection Cricket Tournament 2024-25 organized by Sporting Club Committee Thane. Jai Thakkar coming on to bowl from the opposition end. Once again going right arm around the wicket. Nicely bowled this time, just outside the off stump. Run straight to the wicket keeper. Nicely drived it to the cover region just for a single. A good technique shown over there on each and every delivery, I must say. The forward defensive shot has been the icebreaker which you can see from Sanmeet, and definitely he has used
His crease quite nicely out there in the middle. Saurav is on strike once again. Nicely played, nicely fielded by the short mid-wicket fieldsman. Nicely bowled once again. Nicely defended by Saurav over there. Just as we are going through this lovely cricket finale, also head was going through quite nicely. We can see the updates. Just got Bumrah got the better of head and he is out on 89. That's a body blow for Australia as well. This is nicely bowled once again by Jay. Dot delivery once again. एक आखिरी गेंद आनी शेष. बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से इसको खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में. कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं. ओवर की हुई है समाप्ति. 24 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 73, एक विकेट के नुकसान के ऊपर. और पर्थ में जो मुकाबला चल रहा है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, उसका आंखों देखा हाल. अभी अभी आउट होके पेविलियन रवाना हुए 89 के स्कोर पे, 89 के स्कोर पे हेड, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हुए कुछ पिछले सालों में. भारत के लिए फिनाले हो, WTC का फिनाले हो या वर्ल्ड कप का फिनाले हो. अगली गेंद फिलहाल तो अद्वैत की. कदमों का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया ढंग से, लेकिन फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए बार बार कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सनमीत. एक रिदम यानी कि एक लाइन और लेंथ पे सेटल होने नहीं दे रहे. फिलहाल तो थोड़ी सी खराब क्षेत्र रक्षण, थोड़ी सी उछाल उस गेंद में, खराब उछाल के कारण, और एक रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा टीम को. इस 2 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 75 रनों पे. 44 पे बल्लेबाजी करते हुए सनमीत. बहुत ही सूझबूझ वाली पारी सनमीत की. अगली गेंद बढ़िया ढंग से कलायु के सारे खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में. कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं. 3 गेंदें आनी शेष इस ओवर की. अद्वैत लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए. बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेलते हुए पॉइंट के क्षेत्र में. डॉट डिलीवरी. काफी बढ़िया प्रतिभा दिखाते हुए यहाँ पे सभी खिलाड़ी इस अंडर 14 फिनाले में. काफी एयर दिया. गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर थी, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र रक्षक से काफी दूर. एक आखिरी गेंद आनी शेष. यूनियन क्रिकेट एकेडमी 75, एक रन के नुकसान के ऊपर. बढ़िया डिफेंस दोबारा सनमीत द्वारा. ओवर की हुई है समाप्ति. एट द एंड ऑफ द 25th ओवर, इट्स 75 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. Jay Tucker coming on to bowl the 8th over. The only bowler who has got any wicket. He has been ominous with his line and lengths, whether it may be left-handed batsman Sanmeet or right-handed batsman Ansh or Saurav. Once again going right arm over the wicket.
Nicely bowled this time. Just at the last moment, the bat hit the ball. The second delivery of Saurav was pretty much close, I must say. This time nicely bowled once again. Nicely defended by Saurav. A tall, handsome youngster. Aggressive cricketer. And see, I must say, nicely fielded by the fieldsman over there at the mid-off region. He's an aggressive batsman, but he's toiling it hard out there in the middle because both the bowlers have been good with their line and lengths. Not given any room to the batsman to score runs. This time goes on the back foot. Nicely played it down to the backward point region for a boundary. That's the second boundary of Saurav winning. Score moves on to 79 for the loss of 1 wicket. 79 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. एक आखिरी गेंद आनी शेष. जय ने काफी अच्छा नियंत्रण दिखाया अपने गेंदबाजी में, लेकिन मात्र एक ही सफलता प्राप्त हुआ है लैक ऑफ कंसंट्रेशन के माध्यम से, जबकि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अंश. अगली गेंद इस मर्तबा बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से इसको खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में. 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया. ओवर की हुई है समाप्ति. 26 ओवर के समाप्ति के बाद यूनियन क्रिकेट एकेडमी का स्कोर जा पहुंचा है 80 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. It has been a slow start, but definitely there has been some positive intent being shown by the batsman out there in the middle. Slight change in the bowling. Manthan Gowda once again comes back into the attack. He has been brilliant in his first spell. Saurav will be on strike. Nicely played off the front foot down to the backward point region. Nicely fielded. A good communication between both the batsmen. Couple of runs being taken over there. Score moves on to 82 runs. The ball is now 26 overs old. Will be a little bit softer, I believe. Nicely bowled this time. No shot being offered by the batsman. Let it go alone to the wicket keeper. We'll have to make the batsman play more and more, I believe. Manthan will have to try that. I believe runs are not an issue over here. We'll have to make the batsman play. Nicely bowled this time, right on the block hole. A very good Yorker delivery by Manthan. I believe this is the 4th Yorker delivery, I must say, from the morning itself, and it has been with a surprise. He has not been in the wickets column, but he has out and out foxed Ansh 7 times, I believe, in that morning spell. This time nicely played off the front foot. Just trying to steal a single. A good communication between both the batsmen and a single stolen over there. Still 2 deliveries to go in this over. 83 runs on the board. Sanmeet will be on strike for the first time in this over.
A good start of this spell from Manthan. Bowling wicket to wicket, trying to make the batsman play. Oh, that's the outside edge. Oh, that would have stuck. That would have been one of the best catches. That's what I'm saying. Make the batsman play. Ball to wicket to wicket. You can see the action replay. Quite a nice delivery by Manthan. Takes a good edge. A very good try by the fielder at the second slip. I believe if would have been on the first slip, would have had a better chance to grasp it. Last delivery of this over, once again a pinpoint Yorker. Very good start from this spell from Manthan, showing some aggression. Great going. Some heated stuff out there in the middle, shown by the under 14 players in this finale. So at the end of the 27th over, it's 84 runs on the board for the loss of 1 wicket. Definitely both the team coaches are here. Ajay Kadam sir, Sanjay Sawant sir, we can see. Dhumal sir is also with us here. This is a very, very good platform to all the under 14 players. Definitely, and this tournament is also MCA approved. Good start by Vedant Patil. So Vedant replacing Jay Thakkar from the opposition end. Very good leg spinner, that one. Spun quite a bit, foxed the batsman. But luckily he was in the crease and no edge of the bat. You can see the action replay. A very good action from Vedant. In time, he came back on the crease. Sanmeet. You're watching Sporting Cricket Club, Thane Shatabdi Chashak, Under 14 Selection Cricket Tournament 2024-25. Nicely bowled. This time, showing some aggression, I believe. Sanmeet, he's batting brilliantly at 45 runs. Nicely bowled this time. Nicely played off the front foot. Single taken over there by the batsman. 84 runs on the board. Still 2 deliveries to go in this over. This has been a good start from Vedant Patil. The batsmen are looking a little bit unsettled in this over, just as the new bowler has coming in. On strike it will be Saurav Sinha, the captain from Union Cricket Academy, marking his guard once again for the leg spinner. This has been a good resistance shown by both the batsmen. Nice delivery. This was played uppishly, just out of reach of the fieldsman at the cover region. Just a single, nevertheless. Score moves on to 86. Last delivery to go in this over. An action-packed over after some time. This is way down the offside. No ball being signaled by the umpire. Definitely it pitched outside the pitch.
Last delivery of this over. Nicely bowled this time, way down the offside. Dot delivery. At the end of the 28th over, it's 87 runs on the board for the loss of 1 wicket. It has been a little bit hot out there in the middle. Sanmeet is signaling for water, I believe. I believe the umpires have signaled after this over. They need to stay rehydrated. Tough conditions for all the players. Once again, Manthan. Nicely bowled. A forward defensive shot by Saurav, giving nothing to the bowler. This has been good challenging stuff from Manthan in this second spell. Some words being exchanged in the previous over between Manthan and Saurav. Something is going to give. Just we are waiting for that. Nicely played down to the extra cover region. Just for a single. Too much full that delivery. Nicely played off the front foot by Saurav. Down to the extra cover region. Once again, Sanmeet will be on strike. A slight change in the fielding position, whereas the left-handed batsman coming on strike is batting brilliantly on 46. Faced lot of deliveries, 85 deliveries. Saurav Sinha is batting on 16. Has faced 26 deliveries. This time going right arm round the wicket. Manthan. Nicely played off the front foot. Nicely fielded there by the fieldsman at the short cover region. Still 3 deliveries to go. Nicely played down to the extra cover region just for a single. Couple of runs in this over. Nothing more than that. Those bowlers haven't given anything to the batsmen of Union Cricket Academy. It has been a brilliant bowling display up till now. But just a wicket. They have not been so much lucky, but they have been prominent with their line and lengths. Nicely bowled this time, just outside the off stump. Just kept a little bit low that delivery. One last delivery left in this over. Just dabbing around. Saurav just checking the pitch. Dabbing around some spots which can be cracks. Short of length delivery, didn't rose at all. Played nicely off the back foot. Nicely down to the backward point region just for a single. So at the end of the 29th over, it's 90 on the board for the loss of 1 wicket. Just as we are going through the emotions of this first inning between Union Cricket Academy and Sunrise Sports Club Association, those all viewers who are watching us back at home, you're watching under 14 final being played of Sporting Cricket Club Thane Shatabdi Chashak under 14 selection cricket tournament 2024-25 organized by Sporting Clubs Committee Thane
You're watching live at CricYard.in. Please like and subscribe the channel. And for all the updates, you can go to Instagram ID Sports My Soul. You can watch all the updates over there. Once again, taking on the second over, his quota, Vedant Patil. On strike, it will be Saurav. Nicely bowled. Gave a little bit more air. Full toss delivery, nicely played. Down to the long on region. This will be definitely a boundary after a long time. Nicely played. A poor delivery this time. Definitely. And will ease the pressure out there for both the batsmen. 94 runs on the board. You can see the action replay. A full toss delivery. Gave a little bit more air than he desired, and full toll being taken by the batsman. This time nicely bowled. A forward defensive shot. That's what we have seen from both the three batsmen who have been there. A very good technique being shown by the batsmen. This time slog hit, played nicely down to the deep fine leg region for a boundary. That's the second boundary of this over. It was a little down the leg side and nicely played by Saurav over there. You can see the action replay. It went between deep square leg and a deep fine leg boundary region. Second boundary of this over. Full toss delivery once again, played uppishly down to the mid-off region. Nicely fielded by the fieldsman over there. One last delivery left in the 38th over. 98 for the loss of 1 wicket. This has been a good over for Union Cricket Academy. 8 runs being scored. This time once again reverse scoop it, and this will be the third boundary of this over. So some aggression being shown in this over. 100 up for Union Cricket Academy with that boundary. So at the end of the 38th over is 102 runs on the board for the loss of 1 wicket for Union Cricket Academy. Still too much to do in this match. Still much time left, but they'll have to come back. Sunrise Sports Club Association will need to get wickets to crawl back in this match, and one man who can do it is Manthan. He's looked in good rhythm from the morning itself. This is his second spell. Sanmeet on strike, batting brilliantly on 47. Nicely bowled this time. Once again, a defensive shot. Straight down to the short cover region. Manthan going right arm around the wicket. Nicely bowled. Sanmeet showing no signs of tiredness. Have been there, I believe, approx more than 90 deliveries. Batted brilliantly for 47. Nicely played once again off the front foot down to the deep backward point region just for a single. Not an urgency shown from the batsman to go for the second run. They were quite happy with the single.
Sanmeet batting on 48 of 90 deliveries. Saurav Sinha batting on 29 of 34 deliveries. 103 for the loss of 1 wicket for Union Cricket Academy team. बढ़िया गेंद इस मरतबा फ्रंट फुट पे आके इसको ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में. बढ़िया क्षेत्र रक्षण. यहाँ पे दूसरा रन लेने की कोशिश. डायरेक्ट हिट अगर लगता नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो खतरनाक हो सकता था, लेकिन बाल बाल बच गए. यहाँ पे बढ़िया निशाना साधा था जो क्षेत्र रक्षक थे एक्स्ट्रा कवर पे. बाल बाल बच गए यहाँ पे सनमीत. अगली गेंद मंथन की. बढ़िया हेड इस मरतबा स्क्वायर ड्राइव कर दिया है इसको. गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में. चौका आता हुआ सौरव के बल्ले से. चौथा चौका है पिछले 6 गेंदों में. समय लिया अपने आप को यहां पे ढालने के लिए, पहले तो कुछ गेंदों पे और अब एग्रेशन दिखाते हुए सौरव सिन्हा कप्तान यूनियन क्रिकेट एकेडमी के. अगली गेंद दोबारा सज्ज होते हुए सौरव. बढ़िया गेंद थी. सम्मानजनक डिफेंसिव शॉट खेलते हुए कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं. टीम का स्कोर 109, 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 31वें ओवर की समाप्ति के बाद. And definitely it is a 50 runs partnership between both the batsmen. They had a very good start Union Cricket Academy. और अब जब सौरव आए हैं 50 रन की पार्टनरशिप पूरी करते हुए 70 गेंदों में. तालियां उनके लिए पेविलियन एंड से आते हुई. बहुत ही बढ़िया साझेदारी पनपते हुए दोबारा. जबकि पहला विकेट 69 रन पे गिरा, 59 रन पे गिरा था. अब 50 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में. शौर्य आते हुए गेंदबाजी के लिए. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. बढ़िया ड्राइव मिड ऑन के क्षेत्र में. कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं. पहला ओवर लेके आए हैं सौरव इस पारी का. शौर्य नवले. बढ़िया गेंद दोबारा. एक फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए सनमीत सम्मानजनक शॉट के साथ. 109 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 48 रन पे बल्लेबाजी करते हुए सनमीत. इस बार फ्रंट फुट पे आके ड्राइव कर दिया. बढ़िया क्षेत्र रक्षण कवर के क्षेत्र रक्षक दर्शाते हुए. कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं वहां पे. काफी बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए शौर्य. बढ़िया गेंद इस बार बैकफुट पर जाके हल्के से खेल दिया कलाई के सारे. शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में. क्षेत्र रक्षक तैनात वहां पे. 2 गेंदें अभी भी आनी शेष. स्कोर थमा हुआ है 109 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. 32वां ओवर इस पारी का चलता हुआ. बढ़िया गेंद इस मर्तबा. थोड़ी आगे करने की जरूरत है. मुझे लगता है थोड़ा सा मिश्रण लाने की जरूरत है गेंदबाजी में. ऑफ द विकेट कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. अगली गेंद इस मर्तबा फ्रंट फुट पे आके ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में. 1 रन यहां पे अर्जित किया. ओवर की हुई है समाप्ति. 110 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. 32वां ओवर समाप्त. बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सनमीत 49 रनों पे.
क्या अपना अर्धशतक यहाँ पे पूरा कर पाएंगे? काफी महत्वपूर्ण पारी है सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी बैटर्स के लिए, बैट्समैन के लिए। सनमित 49 रन पे बल्लेबाजी करते हुए, गेंदबाजी की कमान संभाले हुए है अद्वैत। कोशिश बरकरार है यहाँ पे गेंदबाजों द्वारा, पर अब तक मात्र एक सफलता प्राप्त किया है, वो भी मिला है जय ठक्कर को, जबकि अंश रवाना हो चुकी है पेविलियन। बढ़िया साझेदारी पनपते हुए विकेटों के बीच सौरव बल्लेबाजी कर रहे हैं 35 रनों पे, 37 गेंदों का सामना किया, जबकि सनमित बल्लेबाजी कर रहे हैं 49 रनों पे, 96 गेंदों का सामना अब तक कर चुके हैं। अद्वैत की अगली गेंद बैकफुट में हल्के ढंग से कट कर दिया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, और ये अर्धशतक पूरा होता हुआ सनमित का, बैट रेस करते हुए दिखाते हुए। काफी टैलेंट भरा हुआ है इन सभी खिलाड़ियों में, और उनमें से एक आज उभरते हुए नजर आए सनमित कुटमिरे। बढ़िया बल्लेबाजी, 50 रन की नाबाद पारी, 97 गेंदों का सामना किया है। अगली गेंद बढ़िया फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, काफी अच्छी गेंद थी अद्वैत को, बॉल तक पहुंच नहीं पाए बल्लेबाज, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया थी, बढ़िया ढंग से डिफेंड किया उस गेंद को। अगली गेंद कप्तान टू कप्तान, बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, बढ़िया क्षेत्ररक्षण। 3 गेंदें अभी भी आनी शेष, थोड़ा सा एयर ज्यादा दे रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे एक तेज गेंद यहाँ पे करने की जरूरत है, थोड़ा सा वेरिएशन। इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी, हल्के हाथों से खेल दिया इसको शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में। 1 रन चाहते हैं यहाँ पे सौरव, लेकिन सनमित कहते हुए डोंट रन ऑन अ मिसफील्ड, जबकि गेंद क्षेत्ररक्षक के दाएं बाएं हो तो ज्यादा जोखिम नहीं उठाना है, क्योंकि 111 रन और मात्र 1 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल यूनियन क्रिकेट एकेडमी। क्योंकि 1 विकेट और कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्रिकेट में, क्योंकि 1 विकेट के बाद नए बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत हो सकती है, दूसरा विकेट गिर सकता है। तो जब तक ये दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज में हो तो आसानी के साथ राहत की सांस ले सकते हैं खेमा यूनियन क्रिकेट एकेडमी का। एक सिली पॉइंट तैनात किया गया है, अब थोड़ा सा प्रेशर लाने की कोशिश की गई है, थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश। बढ़िया गेंद थी यहां पे, डॉट डिलीवरी। एक आखिरी गेंद आनी शेष, रोमांच बढ़ता हुआ फिलहाल इस ओवर में। एक स्लिप तैनात, एक सिली पॉइंट तैनात किया गया है सौरव स्ट्राइक एंड पे। कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया ढंग से इसको ड्राइव कर दिया है, थोड़ा सा यहां पे हड़बड़ाहट क्षेत्ररक्षण में 1 रन जरूर जुड़ा खाते में। ओवर की हुई है समाप्ति, 33 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 112 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 112 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। So definitely the boys are coming back into the pavilion. It has been a very good start from Union Cricket Academy. Solid foundation by both the opening pair and continued by Sanmeet and Saurav. 112 for the loss of just 1 wicket. The wicket taker Jay Thakkar from Sunrise Sports Club Association. We'll break for a lunch. We'll be back in a short while. Till then you can enjoy the highlights package reel.
You can see both the officials coming on out of the ground, and definitely Mapuskar sir also accompanying them. The finale, you're watching Shatabdi Chashak 2024 selection trial under 14 cricket tournament organized by Sporting Cricket Academy, Thane. You can see the highlight package. The first boundary of Sunmeet Blade, nicely played down to the backward point region. A good spell from Manthan. Troubled a lot to Ansh. Quite lucky out there, Ansh. And then it was on the pads. Nicely played off the wrist down to the deep square leg region for his first boundary by Ansh. After that, I see a good forward defensive shot for a boundary. Once again, Fox the batsman. Manthan, he had a great spell, first spell. Just kept a little bit low that delivery. After that, a nice forward drive down to the deep backward point region by Ansh. Then a defensive shot going down to the long on region. A proper technique being displayed by the batsman, Ansh over there. Then that was an edge. Lucky one for Sunmeet. Went between the gully fieldsman and the second slip. This was nicely bowled once again by Manthan. Takes the outside edge. Goes down to the third man region for a boundary. And then Jai Thakkar came in. Nice bit of loop given to that delivery, but nicely played down to the backward point region by Sunmeet. This was the second boundary of this over. Saurav, the fieldsman, chased it. I believe this will be the first wicket. Nicely bowled this time. Nicely played this time. Chased by the batsman, but all in vain. Slight sloppy fielding by the fieldsman over there. This time goes down the track. Nicely played down to the extra cover region for a boundary. Definitely the technique shown by the batsman has been very good. खास करके समनीत ने जिस तरह से फ्रंट फुट पे ड्राइव किया है, ऑन साइड में खेल दिया है, बहुत ही बढ़िया. आप देख रहे हैं पूरा हाइलाइट्स पैकेज. और ये देखिए अद्वैत अब जाते हुए दोबारा गेंदबाजी करते हुए. बढ़िया गेंद इस बार थी, लेकिन बढ़िया ढंग से खेल दिया था उनके सर के ऊपर से अंश ने. बढ़िया टेक्निक, जैसे कि मैंने कहा, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट दोनों ही बल्लेबाज द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है. इस बार बार बच गए थे. बढ़िया गेंदबाजी थी अद्वैत की, और ये पहला विकेट था. बढ़िया गेंद थी और ऑफ स्टंप ले गई थी अंश का. बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे थे. और उसके बाद बढ़िया साझेदारी रही है. पहले चौका जड़ते हुए गेंदबाज के सर के ऊपर से. यहाँ पे सौरभ,
बढ़िया टेम्परामेंट दिखाया है सौरव ने भी। ये अपील जरूर हुई थी लेकिन नकारा था इस अपील को। हालांकि फील्डिंग साइड यही कह रही थी कि विकेट था, वहां पे एज था, लेकिन अंपायर को वो दिखा नहीं। थोड़े से निराश जरूर रहे। उसके बाद बढ़िया पारी संभाली सनमीत और सौरव ने। ये देखिए बैकफुट पे जाके क्या बेहतरीन ढंग से गाइड किया इस गेंद को। थोड़ी सी खराब बाउंस के चलते 2 रन जरूर वहां पे प्राप्त किए। उसके बाद बढ़िया ढंग से इस गेंद को कट किया है ऑफ द फ्रंट फुट, ऑफ द बैक फुट। बढ़िया तकनीक दर्शाया है सौरव कप्तान इन्होंने। यॉर्कलैंड गेंदबाजी मंथन ने आज पूरे दिन के खेल में कम से कम 7 से 8 यॉर्कर का प्रयास किया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है मंथन की। इस बार बाहरी किनारा था, अगर फर्स्ट स्लिप जैसे कि मैंने कहा रहता तो जरूर विकेट जाने की आशंका थी। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बीट हुए थे लेकिन भाग्य ने साथ दिया, क्रीज पर आ चुके थे। फुल टॉस गेंद, फायदा उठाया था भरपूर यहां पे बल्लेबाज सौरव ने। इस मर्तबा स्लॉक स्वीप किया था, इसको खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच में से 4 रनों के लिए एग्रेशन अपना दिखाते हुए फिलहाल इस ओवर में तीसरा चौका। पैडल स्वीप यहां पे किया था बहुत ही बढ़िया ढंग से, तीसरा चौका इस ओवर में। इस बार ड्राइव करते हुए मंथन को एक्स्ट्रा कवर पे। काफी बढ़िया साझेदारी यहां पे पनपते हुए फिलहाल आप देख रहे हैं हाइलाइट्स पैकेज। और ये बढ़िया ड्राइव, बहुत ही बढ़िया ड्राइव बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए सौरव के बल्ले से। और ये वही क्षण है मुझे लगता है जहां पे सनमीत ने अर्धशतक अपना पूरा किया है फिनाले के मुकाबले में। तो बिल्कुल कुछ देर का विराम है, सभी लोग लंच का मजा ले रहे हैं, तो we'll be also back in a short while. Till then, stay tuned. Keep watching the highlights on CricYard.in, and for all the updates, please join our Instagram ID, Sports My Soul.
after the lunch. Still 1 wicket down. Just 1 wicket down, Union Cricket Academy, and they'll have to bowl out of their skins. Sunrise Sports Club Association, if they'll have to come back into this match. They are in a huddle. Definitely, we have Sanjay Sawant sir, the coach from Sunrise Sports Club Association. सर क्या लग रहा है, अभी तो फिलहाल एक ही विकेट अभी तक गिरा है, तो क्या लगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी अभी आफ्टर लंच? ठीक है, अच्छा पार्टनरशिप हुआ है, लेकिन अभी बॉलर को अच्छा लाइन लेंथ से बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि विकेट बैटिंग के लिए अच्छा है, तो हमको थोड़ा पेशेंस रख के बॉलिंग करना होगा, अच्छी लेंथ पे करना होगा. विकेट आएगा तो मे बी चांसेस क्रिएट होते जाएंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है. मुझे लगता है गेंदबाजों ने अच्छा लाइन और लेंथ रखा, लेकिन लकी ऑन देयर पैड बैटिंग साइड से मुझे लगता है अच्छा डिफेंस टेक्निक दिखाया, और कुछ एज जो लग सकते थे लकी रहे वो. विकेट अच्छा है तो बैटिंग भी इजी है, लेकिन अगर आपको विकेट निकालना है तो आपको अच्छा लाइन लेंथ से पेशेंस रख के बॉलिंग करना पड़ेगा, तो भी विकेट आएगा. तो वही है, बच्चों को वही बोला है, अभी कैसा एग्जीक्यूट करते हैं वही देखना. आई बिलीव अभी स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्ट में आने चाहिए. मुझे लगता है जैसे जैसे पिच थोड़ी सी, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा जहाँ पे जो बाउंस है, स्लॉपी बाउंस है, थोड़ा बीच में बैठ रही है, स्पिनर्स थोड़े इफेक्ट में आने चाहिए क्रैक्स को देखते हुए. स्पिनर्स ही आएंगे मोस्टली, क्योंकि फास्ट बॉलर को इतना ये नहीं है, फ्लैट विकेट होने की वजह से इतना हेल्प नहीं है फास्ट बॉलर को, तो स्पिनर मेनली स्पिनर्स ही चलेंगे. बीच में लगा कि फास्ट बॉलर ज़रूरत है तो ही निकालेंगे, नहीं तो मेनली स्पिनर्स ही चलेंगे. तो क्या कमबैक की आशंका कर सकते हैं अभी भी? लास्ट मैच हमने अच्छा कमबैक किया था, हमने 11 रन में 7 विकेट निकाला था, तो कमबैक कभी भी हो सकता है, एक विकेट और वापस हम लोग मैच में कमबैक कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you so much. This was Sanjay Sawant, sir. So we are waiting for a comeback and is hoping for a comeback. Let's stay tuned. We'll go back to the commentary once again. The live action starts. Thank you. To start the proceedings after the lunch interval, it's Shaurya Navle, 112 for the loss of 1 wicket. Definitely Union Cricket Academy, they are going all guns blazing. The coach will want both the batsmen who are set, they will want them to have a very very deep partnership, and definitely that's what the word from the coach of Sunrise Sports Club Association, Sanjay Sawant sir, was that they are hoping to come back in this match. Last match they had done it, they had taken 7 wickets of just 11 runs. They are just hoping to continue with that only. First delivery nicely played, and that goes down to the backward point region for a boundary. A nice start, a juicy wideish delivery, and nicely played by Saurav Sinha, showing his range of shots once again. Score quickly moves on to 116 for the loss of 1 wicket. The first delivery and showing some intent by Saurav. अगली गेंद शौर्य की. This time nicely bowled, takes outside edge of the bat. This is going down to the third man region. This will be back to back. No, nicely fielded by the fieldsman at the slip cordon. Just kept the batsman for a couple of runs. Score moves on to 118 on the board. Sanmeet batting brilliantly at 50 runs. Saurav batting at 42 runs of just 44 deliveries. Next delivery from Saurya. Once again going left arm over the wicket. Left arm round the wicket. Nicely played. Good pre-lunch session for both the batsmen, settling in under the sun. The pitch has dried up, no moisture I believe, good batting conditions.
Nicely drive officially down to the extra cover region. This will be a second boundary of this over. A good aggressive start after the lunch session. 122 runs on the board for the loss of 1 wicket. बहुत ही बढ़िया उम्दा पारी खेलते हुए यहाँ पे सौरव सिन्हा स्वयं कप्तान यूनियन क्रिकेट एकेडमी के 46 गेंदों का सामना किया और 46 रन बनाए हैं शॉ के स्ट्राइक रेट से। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अपील हुई है यहां पे गेंद लेकिन जा रही है चकमा देते हुए 4 रनों के लिए। अंपायर के इशारे का इंतजार। इट्स ऑफ द बैट। Okay, it's off the bat. Yeah, definitely, and that's the 50 completed. That's the half century for the captain, Saurav Sinha. दूसरे ऐसे बल्लेबाज इस फिनाले के मुकाबले में जिन्होंने अर्धशतक पूरा किया है। बहुत ही बढ़िया पारी सौरव द्वारा। अगली गेंद बढ़िया ढंग से इसको खेल दिया, बैक टू द बॉलर। ओवर की हुई है समाप्ति। पहला ओवर काफी अच्छा रहा यूनियन क्रिकेट एकेडमी के लिए। लंच के बाद 126 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 ओवर की हुई है समाप्ति। बिल्कुल आप देख रहे हैं स्पोर्टिंग सेंट्रल क्लब कमेटी द्वारा आयोजित थाने शताब्दी चषक अंडर 14 सिलेक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 सेंट्रल मैदान से प्रस्तुत करता स्पोर्टिंग क्लब्स कमेटी थाने अंडर 14 के मुकाबले। बहुत ही बढ़िया फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट दर्शाते हुए अपने स्किल्स को, हुनर को यहाँ पे सन्मीत जो पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 50 के नाबाद स्कोर पे दोनों ही बल्लेबाज। अगली गेंद इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल हर के हाथों से कलाई के सारे खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन सीधा गेंद गई शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। अगली गेंद अद्वैत की बढ़िया गेंद, दोबारा डिफेंसिव हिट। हमारे बीच रवि कुलकर्णी सर यहाँ पे उपस्थित है कमेंट्री बॉक्स एंड पे। रवि कुलकर्णी सर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स एंड अंडर 14 करंट अंडर 14 चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमिटी मुंबई के, जिन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था। He has been a part of the Mumbai Ranji Trophy team for quite a while, and now currently he is the chairman of selection committee of Mumbai under 14. This time once again rock on the bat foot, played nicely to the short cover region. That's the over. So at the end of the 35th over, it's 126 runs on the board for the loss of 1 wicket. I believe they will have to be more aggressive in their fielding positions. The field being set by the captains and the coaches a little bit aggressive. Something needs to happen, something they need to do. It will not happen automatically for the Sunrise Sports Club Association because their bowling has been good, but Union Cricket Academy batsmen, they have been on their top gear today. Once again Shaurya going left arm around the wicket.
This is a rock on the back foot. Nicely played down to the deep backward point region for a boundary. That was a very, very good hit. Just judged the length pretty quickly out there. Rocked on the back foot and cut nicely to the backward point region. He is playing brilliantly after the lunch session. 130 on the board for the loss of 1 wicket. Bowled nicely this time, gave it a little bit of more air. Nicely played, nicely defended by Saurav. Straight back to the bowler. Both the match officials, Suhash Vaidya and Asghar Hassan, doing a fair amount of job out there in the middle. Both the officials, they have been very good. This time, nicely driven down to the cover region. Nicely fielded by the fieldsman over there. Lot of chants going on right now because both the batsmen, particularly Saurav, has shown some aggression post lunch. Bowled nicely this time. Very good delivery this time from Shaurya. Settling into a nice rhythm this time. Not giving any room to the batsman. Two deliveries to go in this over. 36th over in progress. This time make some room and cut it down to the backward point region once again. A poor delivery this time. Just I was acknowledging Shaurya, he was giving no room, but this one once again a little bit on the shorter side. And nicely cut that by Saurav. Made room. There was no room for that delivery, but made some room and cut it nicely down to the backward point region. Saurav batting brilliantly on 58. This time once again wanted to cut it. Just a little bit more bounce on that delivery. Luckily no edge found on that delivery. Went straight to the wicketkeeper. At the end of the 36th over, it's 134 runs on the board for the loss of 1 wicket for team Union Cricket Academy. Once again, Advait coming on to bowl. Left arm round the wicket. On strike, it will be Sanmeet. Nicely bowled on the off-stump corridor. Quite a little bit air given to that delivery. Flight given to that delivery. This time nicely played off the front foot down to the short cover region. Settling down once again, Sanmeet taking his guard, taking a little bit of time. This time converted that into a full toss. Wants to seal a single. A good communication between both the batsmen. Easily converted that into a run. Some slight change in the fielding positions. Deep backward point has been brought inside. You can see an extra cover fielder over there and a point fielder now being placed. A deep mid wicket and a deep square leg. This was very nicely bowled. Came a little bit inside, I believe. Very good delivery this time from Advait. Still 2 deliveries left. Right from the pavilion box end of Sunrise Sports Club Association. Lots of chants going on. Trying to energize the bowlers.
This was played officially and inside out hit. Two bounces over the boundary lines. A great hit from Saurav once again. He quickly moves on to 62 of just 56 deliveries. That was not a bad delivery, but a great hit. Inside out shot, you can see, played officially. Saurav showing his talent out there in the middle. This time rocks on the back foot. Wanted to play in on the offside, but takes the inner half of the bat. Went down to the short mid-wicket region. Dot delivery. So at the end of the 37th over, it's 139 runs on the board for the loss of 1 wicket. This has been a great platform for all the under 14 boys. Definitely Ravi Kulkarni sir is with us, who has represented Mumbai Ranji Trophy squad, and currently he is the chairman of selection committee of Mumbai under 14. So definitely all the boys will want to show their great performance. They will want to bring their A game today and tomorrow in this finale encounter. Some change in the bowling. We can see Jai Thakkar coming in to bowl his second spell of the inning. This time takes the outside of the bat. Is it the wicket? Oh, umpire says he didn't see anything of the bat. We thought it was the second wicket for Jai. A very good loopy delivery just outside the off stump. You can see the action replay, and definitely there was nothing. This ball spun out of the rough. A very good decision by the umpire. Nicely bowled this time. Nicely played, a forward defensive shot being offered by Sanmeet. This is nicely played. Once again, Jay settling into a nice rhythm in this second spell. Something happening off the pitch now. This is nicely played once again. Jay has been the only bowler who has been able to take any wicket. This time nicely bowled once again, right on the block hole. Nicely defended once again by Sanmeet. Rocked on the bat foot, nicely cutted, nicely fielded by the fieldsman at point, but couldn't save that single. That's the end of the over, 30th over. It's 140 on the board for the loss of 1 wicket. Going nice and steadily. There was something on the first delivery which was attempted, but pretty quickly neglected by the umpire. Advait once again going. Left arm around the wicket from Sporting Club Committee end. On strike it will be Sanmeet. A deep mid-wicket and a deep square leg being placed. Nicely bowled, nicely played, nicely defended, I must say. It has been a weapon for Sanmeet right from the morning itself. Quite been beautiful with his defensive shots. This time goes down the track. Gave the full face of the bat to that delivery. Played nicely down to the mid-off region. Dot delivery. Once again goes down to tag. This time played nicely down to the mid-on region. A sloppy fielding. Otherwise there would have been a run-out chance if direct hit at the non-striker end. Just a single, nevertheless. 141 for the loss of 1 wicket.
3 deliveries still to go. Once again, back on strike. Saurav Sinha looked in ominous touch. 62 runs of just 15 deliveries. One batsman holding the plot, one showing aggression. This time rocks on the bat foot, cut it down nicely to the point region. Nicely fielded by the fieldsman over there. Dot delivery. A good session after lunch. Some action-packed stuff. This time going down the track. This is officially. This can be a catch and wicket goes down. That's what they wanted, and Saurav is back into the hut. He was playing brilliantly, but Advait was holding up one end. This was tossed up a little bit. Forced the batsman to play inside-out shot, and it was nicely held by the fieldsman at the cover region. So second wicket down. Is this the opening that was looked up by Sunrise Sports Club Association? We'll wait for. That's a second wicket down for now at least. But a very, very fine inning. Lot of claps from the pavilion. A very fine inning from the captain himself, Saurav. You can see the action replay. Nicely bowled and nicely held on by the fielder. Rishabh Sonavne, a very good catch. A very good catch from Shaurya, and new batsman coming in. Rishabh Sonavne, a new batsman. Finally, Advait tastes success over there. He has been very good with his variations, and finally he succeeds. And the other counterparty, that is his captain of the opposition side, he has sent him back to the pavilion. New batsman coming in, Rishabh Sonavne. Advait will still continue with his over. Just one delivery left. Is this the opening they were looking for? Will there be a comeback after this wicket? It won't be easy out there for the new batsman, because the pitch is doing something now. Slip in place. Splighted delivery, nicely defended by Rishabh. His first delivery. That's the over, successful one. So at the end of the 39th over, it's 141 on the board for the loss of 2 wickets for team Union Cricket Academy. Two wickets down. Jay coming on to bowl the next over. He'll be going right arm round the wicket. Sanmeet on strike. This time played a little bit uppishly down to the backward point region. Dot delivery. Been a real fight between the bat and the ball from the morning itself. The bowlers of Sunrise Sports Club Association, they haven't given anything, but it has been a steady fight from the batsmen of Union Cricket Academy. They've shown their skills, their talent. This time played nicely. Oh, a little bit of bad bounce for the fielder at the point region. Just a single. Can't be shot over here on this pitch, I believe. Need to keep a little bit towards the batsman and let the pitch do the rest.
The new batsman on strike, Rishabh Sonawne. Very good talent. This time, a very good delivery. Just went through the motions, I believe. Next delivery from Jay. Going right arm over the wicket. Nicely bowled this time. Nicely defended off the back foot. This is paid uppishly. But luckily falls safe. Just a single nevertheless. Opens his account with this single. Trying to be positive. Rishabh Sonawne. Last delivery of this over. Nicely left by the batsman Sanmeet. So at the end of the 48th over, it's 143 runs on the board for the loss of 2 wickets. Post-lunch session, it has been action-packed. After that, a flurry of boundaries from Saurav, and after that, the wicket goes down. Advait tastes success. So now, once again, we can see quite defensive in their approach, both the batsmen. Saurav, Rishabh wants to settle down. Sanmeet is batting brilliantly on 54 runs. He have already faced 118 deliveries. Advait once again continuing from the Sporting Sports Club Committee end. He'll go left arm around the wicket, and Rishabh will be on strike. A silly point in place, a slip in place, attacking fielding positions we can see, and that's what we want. Aggressive cricketing approach if you want to crawl back into this match. 143 for the loss of 2 wickets. They will require more and more wickets. Next delivery. Very good delivery, right from the off some channel. Nicely blowed, just left it alone. Let it go to the wicket keeper. Good steady start from Rishabh as well. This time once again blows nicely on the off-stump corridor. Just spun a little bit. Went to the wicket keeper. Action replay of the previous deliveries. 2 deliveries to go. Advait settling into a nice rhythm. Shown his intent. Rishabh, he wants to settle in. He wants to take some time out there in the middle. There is no hurry at all. This time this is up in the air. This is up in the air. And wicket goes down. That's the 3rd wicket down and the 2nd one for Advait. Brilliant piece of bowling. 4 deliveries right on the off-stump corridor. And spun a little bit this time on the leg side. Spun a little bit. Wanted to play it down to the mid-on the region. But went straight to mid-wicket and wicket goes down. That's the 3rd blow this time for Union Cricket Academy. And definitely they are making inroads.
Start of the new over. Jay coming in. Nicely drive this time by Sanmeet. Third wicket down. New batsman coming in. Adarsh Kanojia at the non-striker end. Lot of chants from the pavilion of Sunrise Sports Club Association, trying to energize the fielders definitely, and it has worked out in their favor. Lot of air, nicely driven this time once again, but straight to the fieldsman at the cover region. Sanmit has been holding up one end, but 2 wickets down at the other end. Post lunch. This time Nasi played off the back foot. Both the spinners doing a very good job in tandem. From the opposition end, Jai Thakkar, and from our end, it's Advait. Nicely driven once again, nicely fielded, good cricket. Still 2 deliveries to go in this over. Still 3 deliveries to go in this over. Quite a lot of air outside edge, but luckily it is out of reach of the slip cordon, and nice bit of fielding by the point fieldsman. Ran 20 to 25 feet and covered that ball and kept the batsman just for a couple of runs. You can see the action replay. There was a slip over there. Takes the outside edge of the bat, but luckily out of reach of the first slip. If there would have been a second slip, it would have been swallowed, I believe. This time, nicely driven down to the mid-off region. Just a slight misfielding over there allows the batsman to get to a single. Score moves on to 146 for the loss of 3 wickets. (146 for the loss of 3 wickets at the end of the 42nd over. Advait once again. Nicely driven off the wrist down to the cow corner just for a single. Nicely fielded by the fieldsman over there. All batsmen have come and gone, but Sanmeet is looking in no hurry out there in the middle. Quite chilled and relaxed. New batsman taking strike, Adarsh Kanojia. 3 wickets down. Nicely bowled this time. Nicely defended confidently by Adarsh. 2 wickets have been taken by Advait. Has looked quite positive with his intent. His liner length has been brilliant. Gave a little bit of air, spun a little bit, went to the wicket keeper. A good judgment this time by Adarsh Kanojia. This time goes down the track. Slight misfielding this by the fieldsman at mid-off region. Nicely backed by him once again. But a couple of runs to open his account. Adarsh. Score quickly moves on to 149 for the loss of 3 wickets. Next delivery. Nicely defended once again.
A very good slog sweep down to the deep mid wicket region. That's a boundary. A very good confident display of shot this time by Adarsh. So at the end of the 43rd over, it's 153 on the board for the loss of 3 wickets for Union Cricket Academy. Still lot of overs left today. Taking a bit of time, Sanmeet Adarsh Kanojia. A very good slog hit down to the mid wicket region for a boundary. A good start for him, batting at 6 runs of just 5 deliveries. Sanmeet, he has been batting right from the morning itself from ball 1, 58 runs of 125 deliveries. Jai Thakkar coming on to ball once again. This time nicely driven. A good communication between both the batsmen. A positive approach by Adarsh as well. Single nevertheless. Score moves on to 154 for the loss of 3 wickets. This has been a great platform for all the under 14 boys. Ravi Kulkarni sir is also with us. The chairman of the selection committee, Mumbai under 14. You would have his eyes on all those boys. And it has been a tremendous performance from some of the boys out there in the middle. This time nicely bowled, gave a little bit more air. Nicely played off the front foot down to the mid-on region. And this is an appeal, but umpire says it's going down outside the off stump. The impact might be outside the off stump. It was a very good delivery. Yes, definitely, I believe. Very good decision by the umpire. This time nicely bowled. Nicely bowled this time. Adarsh Kanojia on strike. Still 2 deliveries to go in the 44th over. 11 overs after lunch. This time nicely bowled and nicely played as well. Didn't budge to give anything to the bowler. He knew that the ball will go over the stumps and to the wicket keeper. Last delivery of this over. Jai going right arm around the wicket. Just to change in some strategy. This time goes down the track. Played nicely. A slogs hit down to the mid wicket region for a boundary. A good hit this time from Adarsh once again. So at the end of this 44th over, it's 158 runs on the board for the loss of 3 wickets. Talking about cricket from the morning itself, we have had our eye on the match going on between India and Australia at the Perth wicket, and Australia are 9 wickets down, still requiring 301 runs. Only the last batsman, Josh Hazelwood, is there, and Alex Carey. So good signs for India, just winning the first test match, I believe. Just 1 wicket left, and in between a very good delivery once again from Advait, still carrying on. Sanmeet holding his ground once again. This one gave a little bit more flight, paid nicely down to the backward point region. Dot delivery.
Next delivery comes down to track. Make kiss on the full. Nicely played down to the extra cover region. And the boundary after a while for Sanmeet. This was very nicely played. Advait had given a little bit of more flight on that delivery. Comes down to track. Sanmeet converts that into a full toss and played nicely down to the extra cover region. Next delivery, rocks on the back foot. Played nicely down to the short cover position. Dot delivery. It has been a good fight back from Sunrise Sports Club Association. But slowly and steadily, this partnership is growing. This time played nicely down to the mid-off region. Nicely fielded by the fieldsman over there. Just one last delivery left in the 45th over of the inning. 12th over after lunch. Gave it a little bit of air. Uppishly played. Nicely fielded at the backward point region. Dot delivery. 162 for the loss of 3 wickets. You're watching Sporting Club Committee Thane Shatabdi Chashak Under 14 Selection Cricket Tournament 2024-25 organized by Sporting Clubs Committee Thane. Live on CricYard.in, and for all the updates you can go to Sports My Soul Instagram ID for all the updates regarding this event. Nicely played this time off the wrist down to the cow corner region. The ball is racing down to the boundary holdings, and that's the boundary. A very good cricketing hit. This by Adarsh Kanodia. Took some balls, 4-5 balls to settle down, and after that he has shown some great intent out there in the middle. That's the third boundary of his blade. Adarsh Kanodia batting brilliantly on 14 of just 11 deliveries. This is goes on the back foot, nicely bowled this time. Didn't give any room to the batsman to cut it. Union Cricket Academy 166 for the loss of 3 wickets. This time bowled nicely, gave a little bit of air, slowness. Just a slight misfielding, a slight miscommunication as well, but no harm done. Just a single stolen over there. Score moves on to 167 for the loss of 3 wickets. That's what they would be aiming for, at least 250 runs on the board. This time nicely played down to the square leg region. Just for a single, Sanmeet moves on to 64 of 133 deliveries, whereas Adarsh Kanodia batting on 15 of just 13 deliveries. Two deliveries to go in this over. Jai Thakkar continuing. Right arm over the wicket. Nicely played down to the mid-on region. Nicely fielded. Just a single over there. A good partnership developing between both the batsmen Adarsh Kanodia and Sanmeet Kotmire. Slight change in the fielding positions. The left-handed batsman Sanmeet coming on to take guard. Flighted delivery. Nicely defended off the front foot. That's the end of the 46th over. 169 on the board for the loss of 3 wickets.
Definitely, as all the years go by, we all wait for the women's championship, and definitely it is going to start on 29th of November, where you can see all the women's performing and giving their best out in the middle. Late Arjun Marvi Women's Championship will be starting from 29th of November, right sharp at 9:30 a.m. from Sporting Cricket Academy itself. Coming on to ball once again, Advait left arm around the wicket. Nicely bowled this time. Takes the inner half of the bat. Went down to the slip cordon, but you can see in the action replay, very softly, very delicately played by the batsman Adarsh. Didn't poke at it. This time comes down the track. That's a mighty hit. Yes, definitely. 2 bounces, 3 bounces over the boundary lines. That's the 4th boundary of this inning from Adarsh Kanojia. 173 for the loss of 3 wickets. Shown some intent, Saurav, his captain. The captain definitely showed intent while he was at the crease. But after that, Adarsh has batted brilliantly. This time nicely bowled. Right on the block hole. Good delivery this. The good comeback from Advait. 3 deliveries still to go in this over. 47th over of the inning. This time nicely slogged hit down to the cow corner. Nicely fielded by the fieldsman over there. Just a single nevertheless. Very good effort from the fielder down to the cow corner end. Score moves on to 174 runs for the loss of 3 wickets. They're still in search of wickets. They will require more wickets if they'll have to restrict them below 250. Next delivery. Nicely rocks on the back foot. Slight misfielding by the fieldsman at the cover region. Just a single. Nicely back up by the extra cover fieldsman. Last delivery of this over. Once again back on strike, Adarsh Kanojia. Short of line delivery this time. Appeal, but quite down the leg side. At the end of this over, 175 runs on the board for the loss of 3 wickets. New bowler coming in. Second spell, Vedant Patil. Full toss delivery. Slight miscommunication. Direct hit at the striker end would have been shambles for the batsman, but a wayward throw allows the batsman for going for the second. Good communication this time from both the batsmen for the second. Score moves on to 177 runs on the board. Vedant Patil hasn't looked in rhythm, but will have to settle down pretty quickly. Leg spinner in the team. Nicely bowled this time. We'll have to make the batsman play if we want at least some result. This time quite a wide delivery and a wide being signalled by the official. With this one extra run, score moves on to 178 for the loss of 3 wickets. Vedant Patil going right arm around the wicket.
over the wicket. I'm sorry. This time once again way down the offside. White ball means signal once again. That's what I said. Vedant Patil hasn't looked in a rhythm totally in this final match. Right from the morning itself, a little bit wavered he has been with his line. Once again converted into full toss, nicely driven, and good running between both the batsmen. Adarsh coming on strike once again. Adarsh Kanogia. Still 3 deliveries left in this over. This was outside the leg stump. Dot delivery nevertheless. No real attempt by the batsman to play that delivery. This time it was nicely bowled, but just outside the off stump. Spun a little bit, went straight to the wicket keeper. Last delivery of this over. Nicely defended by Adarsh. So at the end of the 48th over, it's 180 runs on the board for the loss of 3 wickets for Union Cricket Academy. And we'll just take a short break. Drinks break. Advait continuing from the sporting club committee end. He'll go left arm over the wicket. Nicely bowled. अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी. अपील हुई है लेकिन नकारा उस अपील को अंपायर सर ने. काफी बढ़िया साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच. आदर्श कनौजिया और सनमीत कोटमीरे. बढ़िया गेंदबाजी लाइन में अद्वित अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं. क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए थोड़ी सी स्पिन नजर आई है गेंदों में. थोड़ी सी हरकत नजर आई है विकेटों में से. तो अब एक शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात किया गया है. कदमों का इस्तेमाल किया था यहाँ पे सनमित ने, लेकिन सम्मानजनक शॉट के साथ खेल दिया बैक टू द बॉलर. डॉट डिलीवरी आती हुई. काफी सूझबूझ के साथ एक शॉट संभाले हुए हैं सनमित 68 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए. इस बार फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेल दिया बैक टू द बॉलर दोबारा. बढ़िया नियंत्रण दिखाया है अपने फुटवर्क के ऊपर. बढ़िया टाइमिंग दिखाई है उन्होंने. हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया. इस मरतबा बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से कलाई के सारे खेल दिया. स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया. बढ़िया तालमेल दोनों ही बीच में. और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए बल्लेबाज. स्कोर जा पहुंचा है 182. 3 विकेट के नुकसान के ऊपर एक आखिरी गेंद आनी शेष. 49वां ओवर समाप्ति के कगार पे. बढ़िया गेंद इस बार थोड़ा ऑप्शन से बाहर थी. थोड़ा आगे आके फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए सनमीत. ओवर की हुई है समाप्ति.
नए ओवर की शुरुआत आसानी के साथ खेलते हुए इसको शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। दोनों ही बल्लेबाज अब सेटल नजर आते हुए काफी बढ़िया ढंग से इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था और लगभग जिसको हम कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स, ऐसा लग रहा था मानो बहुत बढ़िया ढंग से सेटल हुए बल्लेबाज, लेकिन कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन बाल बाल बच गए, पैरों के जाके लगी है गेंद, अन्यथा स्टंपिंग करने का मौका जरूर था। वेदांत अच्छी वापसी करते हुए इस बार स्लॉक का स्वीप किया है, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से। बढ़िया हिट आता हुआ आदर्श के बल्ले से और एक चौका, 5वां चौका है उनकी पारी का। बहुत ही बढ़िया नियंत्रण दिखाया है उन्होंने अपने फुटवर्क और टाइमिंग में। स्कोर जा पहुंचा है 186, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद दोबारा वेदांत पाटिल की, काफी बढ़िया गेंद थी ये, बढ़िया कमबैक यहां पे वेदांत द्वारा, काफी एयर दिया, काफी फ्लाइट दी इस गेंद को। तो इसी तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता है वेदांत को अगर परचेज ज्यादा लेना है इस विकेट से। तो जी देखिए अभी बढ़िया लाइन और लेंथ में सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं वेदांत। बढ़िया पिछली 2 गेंदें बहुत ही बढ़िया रही है वेदांत की, थोड़े असमंजस में पाए गए हैं बल्लेबाज। एक आखिरी गेंद इस ओवर की, बढ़िया गेंद बढ़िया ओवर। हालांकि एक चौका जरूर आया है लेकिन कोशिश करनी पड़ी है बल्लेबाज को, स्लॉग हिट करना पड़ा है। ओवर की हुई है समाप्ति, 50 ओवर के समाप्ति के बाद 186 पे 3 विकेट यहां पे यूनियन क्रिकेट एकेडमी। पचासवां ओवर पूरा होता हुआ 51st over in progress, and after this it will be a drinks break. The good news from Perth is that India has won the match with 295 runs. Congratulations to all the Indians. A great show down under on the first match itself, and it has been a great show from Sanmeet here, batting brilliantly on 71 runs of 145 deliveries. अगली गेंद शौर्य की, slight change in the bowling. Shaurya coming on from this end, sports club end. On strike Adarsh Kanojia, nicely bowled this time, nicely played, left it over and let it go to the wicket keeper. 4 deliveries to go before the drinks interval. Oh, nicely bowled this time. Just kept a little bit low that delivery, but no harm being done. It was just outside the off stump. Goes down the track, takes the inner half of the bat, goes down to the square leg region, just for the couple of runs. Some mind games being played out there, and this will give some confidence to the bowler as well, Shaurya, because the batsman had gone down the track, foxed by that delivery, but inner half of the bat and goes down to the square leg region. A good delivery nevertheless from Shaurya. Still 2 deliveries to go. Nicely bowled, nicely defended off the front foot this time. Down to the square leg region. Went for a single. You're watching Sporting Club Committee Thane Shatabdi Chashak Under 14 Selection Cricket Tournament 2025 and 26 organized by Sporting Club Committee
Thane. Last delivery of the 51st over. 190 on the board for the loss of 3 wickets. Union Cricket Academy. Oh, that was a very good delivery. Just rose out from the rough, went straight to the wicket keeper. So a 5-minute interval, just a drinks break. Till then we'll get back and you can watch the highlights out there from the middle. By Saurav over there right after the lunch session. 3 back-to-back boundaries, one of the edge as well. Advait has been good after the post-lunch session. Nicely rocked on the bat foot. You can see back-to-back boundaries. Talking about Saurav, he was really good off the back foot, and anything on the onside or offside, he was very much in position to hit uppishly. You can see Sanmit also. This was the appeal, but neglected by the umpire. And this was the wicket. An important wicket. And I believe Advait got back-to-back wickets. Saurav went pretty after Saurav. It was Rishabh who went pretty quickly, wanted to play on the onside, went uppishly off the edge straight to the mid wicket, and after that it has been a good partnership from both the batsmen. This was a chance. If the second slip would have been there, it would have been swallowed by him. So we'll start after the drinks break. So after the drinks breaks, it will be Vedant Patil, the leg spinner, who has now looked in a good rhythm, but a slight misfielding by the fieldsman at the mid-off region. A couple of runs stolen by the batsman. Vedant is now confidently tossing the deliveries just outside the off stump. Just need to be a little bit on the straighter side, I believe. Just a little bit of variation this time. Nicely bowled. Nicely played of the front foot down to the extra cover region just for a single. Score moves on to 193 for the loss of 3 wickets. And the 50-run partnership is up for both the batsmen. There has been a good partnership of just 62 deliveries. Both Adarsh and Sanmit. This time nicely bowled. Dot delivery. 193 runs on the board. Still lot of overs left today. Nicely bowled once again, just outside the off stump, and spun a little bit, came inside. Sanmit
let the ball go to the wicket keeper. This time nicely played off the front foot down to the mid-on region, just an on drive. The single run score moves on to 194 runs for the loss of 3 wickets. Just slow and steadily accumulating the runs. This has been the hallmark of this partnership. They have gone about nicely with their work, both the batsmen. This time driven nicely down to the cover region, nicely fielded. One more over completed. So at the end of the 52nd over, it's 195 runs on the board for the loss of 3 wickets. They are going at 3.75 runs per over. Coming on to bowl once again, Shaurya from the Sporting Club Committee end, left arm around the wicket. On strike it will be Adarsh. Nicely played off the back foot, straight to the fielder at the cover region. Both the batsmen had not shown any intent of aggression, holding up both the ends quite nicely. After the fall of 2 quick wickets, a very good partnership between both the batsmen. Slight fielding error over there by the mid-on fieldsman lets the batsman to take over a single. It has been a very, very good effort from both the teams out there in the middle. Giving a little bit more flight, Shaurya over there. Has a good round arm action. A very good action. A tall guy. This one is a little bit flatter but a little bit shorter side. Dot delivery nevertheless. 2 deliveries to go still in the 53rd over of this inning. 196 runs on the board for the loss of 3 wickets. Sanmeet once again defending. It has been all about defense, grinding the bowlers out there in the middle. Sanmeet, 152 deliveries for 72 runs. It has been an innings of patience out there in the middle. This time nicely driven straight to the cover fieldsman. So at the end of the 53rd over, it's 196 runs on the board for the loss of 3 wickets. Still finding it hard now. Sunrise Sports Club Association bowlers hungry for wickets. They have got back-to-back wickets from their captain Advait, but after that once again a steady partnership between both these 2 batsmen. Still they will be searching for wickets to keep them under 250 runs. That's what their main aim will be going on to this session. Vedant Patil once again going right arm over the wicket. Nicely played off the wrist down to the mid-on region. Nicely fielded but couldn't stop for taking the batsman.
Next delivery. Slight change in the fielding positions. This time Vedant going right arm. Round the wicket. Full toss delivery. Couldn't make a meal of it. That was a full toss delivery. Could have hit anywhere. This was a short of line delivery. Spun a little bit. Went straight to the wicket keeper. Sanmeet not taking any chances. Just holding up one end. Has been brilliant display of patience by him. This time nicely played off the hips down to the square leg region. Just for a single. He moves on to 73 of 156 deliveries. Adarsh batting brilliantly on 34 of just 38 deliveries. Lot of flight, full toss delivery, play down to the deep square leg region. That's the first maximum of this inning. That's definitely 200 up for Team Union Cricket Academy. 204 runs on the board for the loss of 3 wickets. You can watch the action replay. That was just a poor delivery from Vedant Patil. A full toss delivery. Nicely dealt it. Next delivery. Once again a full toss delivery. This time a way bit on the lower side. Played nicely off the wrist down to the cow corner region. Just a couple of runs over there this time. That was an expensive over. So at the end of the 54th over, it's 205. Definitely one short run has been signaled by the umpire. So it will be one run just added to the score. 205 for the loss of 3 wickets. Shaurya once again continuing. Short of lengthily rocked on the back foot. Wanted to cut it but played straight to the point region. Sanmeet on 73. 27 runs away from the miraculous figure. This time played nicely off the wrist. Down to the mid-wicket region. Just for a single. The sun has quite settled a bit, I believe, and it is a pure signal of a nice batting track. Hasn't been any demons in the pitch, hasn't misbehaved much, and it has been all hard work for the bowlers out there in the middle. This time rock on the back foot, played nicely down to the long on region. Nicely fielded by the fieldsman over there just for a single. Partnership rolling up nicely. On strike once again, it will be Sanmeet Kotmire. Batting brilliantly on 74 runs. Short of length delivery. Nicely played it down to the deep mid-wicket region. Fielder over there just kept it for a single. One last delivery left in this over. On strike, it will be Adarsh.
Flatter short of line delivery. Dot delivery nevertheless. So at the end of the 55th over, it's 208 runs on the board for the loss of 3 wickets. Doesn't seem any change with the rear guard. Both the batsmen have shown they are going about their work pretty nicely. The sun has settled down just as their seamless batting effort. I can see some change in the bowling. So will there be any change of fortunes for team Sunrise Sports Club Association? I believe Arjun is coming on to bowl the next over, or is it Manthan? Manthan coming on to bowl the next over. His first over from the opposition end. I believe the first and the second spell has been from the Sporting Club Committee end. For the first time in this match, he'll go from the opposition end. Will there be any change in fortune? Not right now. Nicely played off the hips down to the short mid-wicket region for a single by Sanmeet once again. Been the same story right from the morning itself. He is going strong. Just 24 runs short for a ton in this final. Adarsh batting brilliantly on 42 of just 43 deliveries. Manthan once again, right arm over the wicket. Wanted to slog hit, inside out shot, a rash shot this time from Adarsh. That's the first time we have seen some rash shot being offered. Lucky though. Just some message from the dugout, I believe. Nicely bowled, nicely played, down to the mid-off region. A slight hesitation, but a single completed by the batsman. 210 on the board for the loss of 3 wickets. Still 3 deliveries to go. Sanmeet once again back on strike. Going as tough right now for the bowlers. Nicely forward defended once again. That has been the hallmark of today's play for Sanmeet. Anything he has seen which is coming on the wickets, he has been able to just defend, defend and defend. Next delivery, this time nicely guided it down to the backward point region. Nicely fielded. That has been quite an good display of fielding by some of the fieldsmen of Sunrise Sports Club Association. Haven't given anything to the batsmen. Any extra runs, I believe. Any easy runs. Manthan once again going right arm around the wicket. Nicely bowled this time. Just get a little bit low, but nicely defended once again by Sanmeet. So that's the end of the 56th over. 210 runs on the board for the loss of 3 wickets. Great competition out there in the middle. You're watching Sporting Club Committee Thane Shatabdi Chashak Under 14 Selection Cricket Tournament 2024-25 organized by Sporting Clubs Committee Thane. Right from Central Maidan Thane. Once again Shaurya going left arm round the wicket. Adarsh will be on strike. Rocked on the back foot. Nicely played down to the mid-on region. Nicely fielded.
No chance of a run over there. Just 3 or 4 balls it has been. Adarsh is showing a little bit signs of stiffness. I believe hasn't been facing too many deliveries. This is once again played nicely down to the mid-on region. Hasn't been on strike for much deliveries. Sanmeet has been taking most of the strikes. Looking a little bit impatient. Nicely bowled this time. This time confidently defended off the front foot. 3 deliveries still to go in this over. Something might happen. We can sense that. And this is, they want to slog, sweep it, but takes inside half of the bat. Going down to the deeper square leg region. Nicely fielded once again. Kept the batsman. There should have been a third, but Sanmeet was not at all interested on that third run. Just a couple of runs. Score moves on to 212 for the loss of 3 wickets. 2 deliveries to go in the 57th over of this inning. Short of line delivery this time. Rocked on the bat foot. Played nicely down to the mid-on region. Nicely fielded once again. It has been a good over from Shaurya this time. Gave a little bit of air. This could be a catch. Just out of reach of the fielder at the slip cordon. Must have struck his hand out there, his forehand, but that was a good attempt. That was a very good delivery from Shaurya. Wanted to slog hit once again, slot sweep attempted. It was up in the air, but just minimum, just 1 feet difference. A diving effort would have been much more handier for the fieldsman. You can see the action replay. Gave a little bit more air. Shaurya, this was a very, very good delivery. But luckily for Adarsh, away from the fielder, a single being scored over there. So at the end of this over, there was an action in the last delivery of the previous over, but not to be. Luckily, the ball falls safe away from the fielder. Manthan coming on to bowl the next over. He's going right arm over the wicket. Adarsh will be on strike. This time nicely bowled way down the leg side. I believe the impact might take the delivery out of the leg stump. Adarsh batting brilliantly on 46 runs. This is played upishly. This is going down to the backward point region. A slight misfielding and it goes down to the boundary. And a half century for Adarsh.
That is the third half century in this inning. First one being Sanmeet, the second one being Saurav, and the third one being Adarsh Kanojia. Batting brilliantly on 50 of just 52 deliveries. Nicely played off the front foot down to the mid-off region. Dot delivery. Just waiting for something to happen. The bowlers of Sunrise Sports Club Association toiling it hard, but no help from the pitch. This time nicely bowled once again. Just outside the off-stump corridor. He has been brilliant right through the morning session. Hasn't been among the wickets, but has been brilliant with his line and lengths, with his variations as well. 2 deliveries still to go in this over. This time a slog hit attempted. A very good fielding that by the fielder at the square leg position. Just kept the batsman for a single. Last delivery coming up of the 58th over of today's play. Last delivery nicely defended of the front foot. So at the end of the 58th over, it's 218 runs on the board for the loss of 3 wickets for team Union Cricket Academy. Shaurya coming on to bowl the next over. Nicely bowled just outside the off stump. Everyone will be eagerly waiting for the IPLs to happen, and IPL auction is already on the card. I have a fellow member of mine, fellow player. Your name? Shervil Parab. Shervil Parab. Shervil Parab is with us. He will tell us all about IPL auctions which is happening. Shervil. Next delivery. Quite a flatter one, goes down to the back foot, played nicely to the short cover. No run been taken. Next delivery. Quite a lot of air, played nicely off the wrist but down to the mid-on region. We also have Sharnav. So we'll just ask after this over, Sharnav, Rishabh Pant going for 27 crores. How does it feels? Next delivery. Quite a good forward defensive shot once again by Adarsh Kanojia. 2 deliveries to go in this 59th over. That's been a good session for both the teams. 2 wickets after the post-lunch session, but after that it has been a steady partnership. This time up little bit flatter, nicely hoisted it down to the cow corner region, and that will be a boundary. Good intent shown by Adarsh once again. He moves on quickly to 55 of just 61 deliveries, and it's 222 on the board for the loss of 3 wickets.
Last delivery of this over on the leg side. Dot delivery. So at the end of the 59th over, it's 222 on the board for the loss of 3 wickets. Arnav, so how does it feel? It was previous auction 24 crores I believe for Mitchell Stark, but Indian cricketer Rishabh Pant getting 27 crores. He's very happy now. Now he's thinking about that I have 27 crores. Now he also have a pressure that that team he selected, that he have to play very good now, and I'm thinking that he also play good, and I'm supporting MI, and Mumbai Indians are taken Namandir and Trent Bolt. Uh, Maybe this title will go to Mumbai due to Jasprit and Trent Bolt bowling lineup. Great, great. Nicely bowled this time. We start with the next over. Jay Thakkar once again back into action. Arnav says he supports MI team, Mumbai Indians, and he says that it might be that Mumbai Indians will be holding up the title 6th time this time. Very good shot of the back foot down to the short mid wicket region. No harm being done. Definitely they have gone with the Trent Bolt this time. They have backed him in the auctions, Trent Bolt and Jasprit Bumrah. That will be a heck of a sight to see, both going on for the batsman. Jay Thakkar in action, going right arm round the wicket. This time nicely played out the front foot from Sanmeet once again. Filal, many congratulations to Rishabh Pant for being the most bidded player, that is 27 crores. Nicely played this time by Sanmeet of the front foot. A slight misfielding by the fielder at mid-on position. Just a single nevertheless. The auction today, once again, that second day of the auction will start at 3:30. I believe the leftover players and the unsold players bidding will be done sharp at starting from 3:30 on Star Sports. Next delivery. This time nicely played once again down to the mid-off region, nicely fielded. Last delivery to go of the 68th over of this inning. This time a good slog hit, but straight to the fieldsman at the short mid-wicket region. Wicket goes down out of nowhere. 4th wicket down for Union Cricket Club. Adarsh Kanojia returning back to the pavilion with after a well-made 55 runs of just 64 deliveries. New batsman going in. New batsman going in, Vijay Pal. Wicket goes down out of nowhere. The 4th wicket down. That's what they were looking for. Is this the opening, second opening? That's what they were looking for. The bowlers of Sunrise Sports Club Association. Definitely a little bit of surprise in that IPL element as well. 26.75 crores going to Shreyas Iyer. I believe the team, Delhi team, they were looking out for some captain material, and definitely they shelled out 26 crores. But altogether a happy news for the Mumbaikar Shreyas Iyer. 26.75 crores and Rishabh Pant 27 crores. Let's see at 3:30 what we have in store with the IPL auctions today. But
It has been a pretty good comeback once again in this session. 3 wickets have gone down. 2 from Advait, which has been taken, and 1 once again from Jai Thakur, who has been amongst the wicket in this inning. At the end of the 60th over, it's 222 runs, 23 runs for the loss of 4 wickets. Shaurya continuing once again, left arm over the wicket. Nicely bowled, takes the inside half of the bat. Just was lucky to keep it away from the stumps. You can see the action replay. Oh, just, and I say just. Next delivery. Short of line delivery. This time played uppishly down to the mid wicket region just for a single. Score moves on to 224 runs for the loss of 4 wickets. Still 6 wicket intact with Union Cricket Academy. Still no signs of slowing it down. New batsman taking a little bit of time. Vijay Pal, left-handed batsman. Very good, solid foundation being laid by both the opening batsmen and the middle order. Then the lower middle order will have to consolidate now. Nicely bowled, takes the outside edge of the bat, goes down to the third man region just for a single. Opens his account with this single, Vijay Pal. Nicely bowled. On a good short length delivery, just rose a little bit. Just the pitch has shown some signs at least for an uneven bounce. A little bit wear and tear on that pitch. This time just kept a little bit low. That's what I've said. It has an uneven bounce. Some balls do rise and some balls keep a little bit low. Next delivery from Shaurya. Sanmeet on strike. Oh, nicely played this time. Nicely played scoop shot. Down to the boundary it goes. And it has been a long while since Sanmeet had hit a boundary. So he quickly moves on to 82. He's playing brilliantly, a brilliant knock on 82 of 173 deliveries. That's quite a lot of deliveries. But he is holding one end definitely. 229 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 61 ओवर के बाद। जी बिल्कुल, क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली। अब देख रहे हैं दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज अब आए हैं। स्ट्राइक एंड पे होंगे विजय पाल। पहली गेंद इस ओवर की जय ठक्कर गेंदबाजी करते हुए ऑपोजिशन इन से राइट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए। बढ़िया ऑफ स्पिनर गेंदबाज 2 विकेट चटका चुके हैं। सफलता हासिल हुई थी कुछ ही देर पहले। आदर्श कनौजिया को पेवलियन रवाना किया था। बाहरी किनारा, विकेट का पतन। स्लॉग स्वीप हिट करने की कोशिश की थी, तीसरी सफलता प्राप्त करते हुए जय ठक्कर।
जो भी नए बल्लेबाज आ रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में नजर आ रहे हैं, रनों की गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी उतनी सटीक रही है। यहाँ पे बाहरी किनारा आप देख सकते हैं, एक्शन रिप्ले, बहुत ही बढ़िया फ्लाइट दी थी इस गेंद को जय ने, और थोड़ी सी गेंद घूमी, बाहरी किनारा लिया, आखिरी मोमेंट पे गेंद घूमी और बढ़िया कैच लिया स्वयं कप्तान अद्वैत ने। बहुत ही बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। तीसरा विकेट चटकाया है जय ठक्कर ने और 5वां विकेट इस पारी में। 229 पे 5 फिलहाल तो यूनियन क्रिकेट एकेडमी की टीम। एक शोर संभाले हुए सनमीत बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 82 रन पे नाबाद 173 गेंदों का सामना किया है। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए सिद्धांत सिंह। अंदेशा यही था कि 250 से 260 रन सोचेंगे इस पहली पारी में बनाए, लेकिन काफी अच्छी यहां पे पारी संभाली है सभी बल्लेबाजों ने। 5 विकेट जरूर गिरी है, लेकिन स्थिति अभी भी मजबूत है यूनियन क्रिकेट एकेडमी की। अगर 2 विकेट और यहां पे चटकाने में कामयाब होते हैं अगले 3-4 ओवर में, तो एक वापसी बोल सकते हैं सनराइज की तरफ से। बढ़िया गेंदबाजी यहां पे फिलहाल तो जय ठक्कर की। सिद्धांत सिंह की पहली गेंद डॉट गेंद, अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। बैक टू बैक 3 डॉट डिलीवरीज खेलते हुए अपना समय लेते हुए सिद्धांत कोई रश में नजर नहीं आ रहे। एक आखिरी गेंद, बहुत बढ़िया ओवर ये रहा है जय ठक्कर का, तीसरी सफलता प्राप्त करते हुए अपने टीम के लिए। इस बार बैकफुट पे जाके हल्के कलाई के सारे खेल दिया शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। ओवर की हुई समाप्ति 62 ओवर के बाद यूनियन क्रिकेट एकेडमी टीम का स्कोर जा पहुंचा है 229 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो बिल्कुल और विकेट मेडन ये ओवर रहा है जय ठक्कर के लिए। धीरे धीरे थोड़ा सा ये जो सेशन रहा है मैच में थोड़ी सी रंगत लाते हुए 3 विकेट गिरे हैं, जबकि पहले सेशन में मात्र 1 विकेट गिरा था। दूसरे सेशन में 3 विकेट गिरे हैं और चारों के चारों विकेट स्पिन गेंदबाज नहीं लिए हैं, अद्वैत हो या तो फिर जय ठक्कर हो। बहुत ही बढ़िया कामगिरी की है। फिलहाल गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं अर्जुन जादव, जो कि पहली मर्तबा हमारी एंड से गेंदबाजी करेंगे। सुबह का जो 17 था ऑपोजिशन एंड से गेंदबाजी की थी इन्होंने। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी में वापसी करते हुए अर्जुन। और सनमीत अपना स्टांस दिखाते हुए 82 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए 18 रन दूर उस मैजिकल फिगर से। फिनाले का मुकाबला है, टेंशन प्रेशर उसी के बीच क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की है इस मर्तबा। बहुत ही बढ़िया गेंद, अंदरूनी किनारा जरूर था, गेंद जाके पैड को लगी बल्ले पे लगने के बाद। जो उनका स्टाइल है, जो उनका फुट मूवमेंट है, अभी तक किसी भी गेंदबाज ने शॉर्ट गेंदबाजी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि फ्रंट फुट पे ज्यादा आ रहे हैं सनमीत। अगर उनको थोड़ा सा शॉर्ट गेंदबाजी करे, बैकफुट तेज गति के साथ गेंदबाजी करना आवश्यक। देखिए फ्रंट फुट मूवमेंट पहला तो उनका जो फ्रंट फुट है वो आगे जाता हुआ, तो ज्यादा तो गेंद खेल रहे फ्रंट फुट पे ही खेल रहे।
तो थोड़ा पीछे लेके जाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पेस, रॉ पेस। तो तब थोड़ी दिक्कत में नजर आ सकते हैं सनमीत, लेकिन फिलहाल तो सुबह से जिस तरह से डटे हैं, बहुत ही बढ़िया पेशेंस दिखाया है अपने बल्लेबाजी ने। बढ़िया गेंद, इस मरतबा दोबारा फ्रंट फुट में डिफेंड करते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र में, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ है 229, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 2 गेंद यानी शेष। 63वां ओवर आज के दिन का, 63rd ओवर ऑफ द इनिंग। शॉर्ट ऑफ लैंड, डिलीवरी थोड़ी सी नीचे की तरफ रही, 1 रन चुराने की कोशिश और सफल रहे उस कोशिश में। जी बिल्कुल, थोड़े से आसानी के साथ जा रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज सिद्धांत, लेकिन आसानी के साथ पहुंच चुके अपने क्रीज पर। स्कोर जा पहुंचा है 230, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक आखिरी गेंद आनी शेष इस ओवर की। राइट आर्म ओवर द विकेट जाएंगे अर्जुन। चाहेंगे थोड़ा सा गेंद अगर रिवर्स स्विंग कर सकते हैं तो रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुबह नई गेंद के साथ थोड़ा सा स्विंग होता हुआ गेंद नजर जरूर आ रहा था, लेकिन ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई गेंदबाजों को। अर्जुन की अगली गेंद, बढ़िया गेंद इस मर्तबा, लेकिन फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट के साथ खेल दिया मिड ऑफ के क्षेत्र में। ओवर की हुई है समाप्ति 230, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। यूनियन क्रिकेट एकेडमी आप देख रहे हैं लाइव प्रदर्शन सीधा सीधा CricYard.in के माध्यम से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा इंस्टाग्राम आईडी स्पोर्ट्स माई सोल। अगले ओवर की पहली गेंद जय की। एक एग्रेसिव फील्ड अब इस बार सेट किया गया, एक स्लिप पॉइंट, एक स्लिप तैनात। जय से काफी उम्मीदें हैं फिलहाल तो कप्तान और कोच को। 3 विकेट चटका चुके हैं जय। क्या सनमीत को चुनौती दे पाएंगे, क्या उनका डिफेंस तोड़ पाएंगे? बढ़िया गेंद इस मर्तबा दोबारा विकेटों पे गेंदबाजी करते हुए। फिलहाल तो सनमीत पूरी तरह, जैसे कि हम द्रविड़ की जब बात करते हैं, द्रविड़ सर की बात करते हैं, तो द वॉल, जैसे कि वॉल बने पड़े हैं यहाँ पे सनमीत। हिलाना मुश्किल लग रहा है उनको। इस मर्तबा गेंद ऑन साइड में निकल गई 4 रनों के लिए। 22 के स्वरूप में खाते में जुड़ता हुआ ये 4 रन। 22 के स्वरूप में थोड़ी सी खराब गेंद थी ये, लेग स्टंप से बाहर खेलना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से। 22 के स्वरूप में 4 रन खाते में जुड़ा 234 रन पे 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। It has been tough work for the bowlers out there in the middle. Jay Thakkar has been able to grab 3 wickets, whereas Advait has taken 2 wickets. Slight change in the fielding positions. You can see a deep square leg field spin being placed and a short cover. Quite a flight in that delivery. Nicely driven down to the backward point region. Nicely fielded by the fieldsman. A wayward throw, but they can go for the second. No, they are not going. A slight miscommunication between both the batsmen. No harm being done. Just a single. Nevertheless, 235 runs on the board for the loss of 5 wickets. You're watching Sporting Club Committee Thane Shatabdi Chashak Under 14 Selection Cricket Tournament 2024 and 25 organized by Sporting Club Committee Thane. This time nicely played off the front foot, nicely fielded by the fieldsman at the cover region.
Dot delivery. Last delivery of the 64th over coming up. Nicely bowled, a flatter delivery right on the off stump trajectory, but dot delivery nevertheless. End of the over, 235 runs on the board for the loss of 5 wickets. Siddhant Singh still to open his account, whereas Sanmeet is batting brilliantly on 84 of 182 deliveries. On 29th November, definitely there will be a start of the new season of late Arjun Madhvi Women's Championship. That will be the 5th season. It will be a grand season. Definitely the women's will be here to watch out for. New over starting up. In action, Arjun Jadhav. Single being taken over by the batsman. Sanmeet moves on to 85. Step by step, just nearing the milestone. Nicely bowled. Away from the offside. Nicely defended of the front foot by Siddhant Singh. Shown quite determination out there in the middle. Sanmeet Kothmire. Nicely bowled this time by Arjun. Just trying to get a outside movement of the ball. Just a little bit wave blowing on the ground. Will that help the seamer? Nicely bowled this time. Just get up a little bit low, but nicely played off the wrist by Siddhant down to the deep square leg region. Nicely fielded. Just a couple of runs opens his account with this couple of runs. Siddhant Singh. 2 deliveries still to go in this over. Nicely bowled, nicely played once again of the front foot. Straight to the man at cover. Good batting condition, I must say, right now. A little bit of wind blowing and no more demons on the pitch. Nicely played. Just one hand down to the mid-off region. So at the end of the 65th over, it's 238 runs on the board for the loss of 5 wickets to Union Cricket Academy. Jay coming on to bowl the next over. Sanmeet on strike once again. Oh, that was just out of reach of Silly Point. Just was in the air for a little bit of time. You can see the action replay.
went on the front foot, just takes the gloves, and the silly point fielder was just a little bit away. Nicely played off the front foot this time. Good bowling display by Jay Thakkar. Gave it a little bit right, wanted to poke outside the off stump. Some questions being asked by Jay this time in this over to Sanmeet. It has been a good all-round performance from Jay Thakkar right from the start today morning. This time quite a short delivery, nicely played down to the extra short cover region. Dot delivery nevertheless. 2 deliveries to go in the 66th over. This time came a little bit inside. Bounce was also low, but nicely played. Nicely played by the batsman. Next delivery and appeal. There was some excitement, but not to be. A very good over this time from Jay Thakkar. He has been outstanding with his off spinners. You see the action replay once again. Wanted to poke at that delivery, just spun a little bit, went straight to the wicket keeper. Excellent finish to this over. So at the end of the 66th over, it's 238 runs on the board for the loss of 5 wickets to Union Cricket Academy. You're watching Sporting Club Committee Thane Shatabdi Chashak Under 14 Selection Cricket Tournament 2024-25 organized by Sporting Club Thane. Sporting Club Committee Thane. Arjun coming on to bowl. Right from Sporting Club Committee and right arm over the wicket. On strike, it will be Thane Singh, who's batting on 2 of 12 deliveries. Has taken a little bit of time to get in. Just the last over, I believe, before the tea interval. Nicely played down to the mid-off region. Confident foot movement shown by the batsman. Jay Thakkar will like to have one more go at the batsman because he is settled into a nice rhythm. This time bowled nicely once again, just outside the off stump. Played once again to the mid-off region. A carbon copy of the previous delivery. Thane Singh showing good technique. That has been the hallmark of all the batsmen of Union Cricket Academy. Technique, technique and technique. Oh, this kept a little bit low, but had his eyes on that delivery at the last moment of his wrist. Played down to the square leg region for a couple of runs. That was a good delivery as well, but kept a little bit low. You can see the action replay on that delivery. Just keeping a little bit low that delivery. Was a good delivery. Two deliveries to go in this over. Thane Singh
batting on 4 of 16 deliveries. Nicely played, nicely driven down to the extra cover region, nicely fielded by the fieldsman at the mid-off region. .241 for the loss of 5 wickets. The last delivery of the 67th over coming up. Arjun going right arm over the wicket on strike. It will be Sanmeet on 85. Nicely driven down the ground, straight to the fieldsman at mid-off. That's the over number 67. One more over, I believe, before the tea interval. No, is the tea interval. So it has been a good session for both the teams. Some runs been scored, but definitely 4 wickets going down in this session. We'll back in a short while. Till then, just enjoy the highlights on CricYard.in.
Uh, the coach of Union Cricket Academy, Kishan Pandey. Congratulations, your team has done well up till now. क्या सोच रहे कि कितने हद तक बैटिंग करना है? सोच रहे हैं कि और 12-15 ओवर बैटिंग करें, कम से कम 300-320 तक करके फिर डिक्लेयर करें। पोजीशन काफ़ी अच्छी थी आपके, बैट्समैन काफ़ी सेट नज़र आ रहे थे। सौरव ने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद आदर्श ने अच्छी बैटिंग की, सनमीत ने एक शोर से विकेट संभाला है। बट आई बिलीव अब तक मुझे लगता है अगर थोड़ा इंटेंट के साथ और बैटिंग करते तो 300 के आसपास होने चाहिए थे। यस, यू आर राइट कि हाँ, थोड़ा इंटेंट दिखाना चाहिए था। जहाँ पे रन था वहाँ पे लिया भी नहीं है, बहुत सिंगल भी छोड़े हैं। ठीक है, लेकिन अभी कैसे टेस्ट गेम है, बच्चों को आदत भी नहीं है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं उस चीज़ को। क्या डिफरेंट और कुछ कर सकते थे क्या आज के दिन में? बस वही सिंगल जो है, जो क्लोज, मतलब जो फील्डर पीछे है, बाउंड्री पे है, बाउंड्री नहीं 30 यार्ड पे है, वो सिंगल होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और उसको अगर सिंगल डबल करते थे तो आज टोटल 20-30 रन और प्लस होता था हमारा। सनमीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्योर डिटर्मिनेशन के साथ बैटिंग की है पूरे दिन में, मुझे लगता है अभी तक कुछ तो 185 गेंद का सामना किया है, बट द डिफेंस, द टेक्निक हैज़ बीन सॉलिड। हाँ, बहुत पेशेंस से खेला, एक एंड संभाल के रखा है और इनिंग बिल्ड कर रहा है। सिंगल डबल बाउंड्रीज नहीं, सिंगल डबल में ज़्यादा जो एक टेस्ट क्रिकेट की नींव होती है वो उसने दिखाया है कि हाँ, सिंगल डबल हर मतलब समझो उससे उसकी बाउंड्री ज़्यादा नहीं रहेगी, तो वही एक अच्छा गेम दिखा है। मतलब एक जो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के प्लेयर है, अभी हम देख रहे हैं ज़्यादा करके वो बाउंड्रीज में डील करते। मेन गेम ये है कि आप सिंगल डबल से कैसे अपना इनिंग बिल्ड करते हो, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट अबाउट द बॉलिंग यूनिट, कि आज कुछ ओवर्स उनको खेलने देने का कुछ आपने स्ट्रेटेजी रचा है कि यू विल गो आफ्टर देम टुमारो इटसेल्फ? अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, एक बार गेम चालू हो 10 ओवर में समझे कि कैसा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ये थे कोच जो कि बहुत ही बढ़िया पोजीशन में इनकी टीम है फिलहाल। किशन पांडे, द कोच ऑफ यूनियन क्रिकेट एकेडमी। डेफिनेटली दे आर होल्डिंग द अपर हैंड, बट किस्मत का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। वी हैव विद अस जय। कॉन्ग्रेचुलेशंस जय, अभी तक 3 विकेट चटकाए हैं, कैसा लग रहा है फिनाले में परफॉर्म करते हुए? अच्छा लग रहा है क्योंकि सेमीफाइनल इतना अच्छा नहीं गया था, पर ये मैच में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टीम के लिए, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी 3 ओवर 4 ओवर बचे हैं मेरे, उसमें ट्राई करूँगा 1-2 विकेट और लेने की। थोड़ा टाइम लगा रिदम में सेटल होने के लिए, लेकिन उसके बाद काफ़ी फ्लाइट दिया है। टर्न हुआ है पिच में से? टर्न बहुत मिल रहा है और चेज में कर सकते हैं हम लोग की टीम। ओके, सो यू आर कॉन्फिडेंट विथ योर बैट्समैन? या सो हाउ मच यू आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट देम? क्या लग रहा है कितने तक रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए? अभी भी मुझे लगता है 235 240 ऑड हो गए हैं। 300 तक रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे हम। सो यू थिंक यू हैव द बैटर्स टू गो आउट फॉर द चेज? या बैटिंग हमारा भी स्ट्रॉन्ग है और विकेट है, पाटा विकेट है, तो हम कर लेंगे। पाटा विकेट है, दैट्स नाइस वर्ड, पाटा विकेट है। सो व्हाट अबाउट द प्लेटफॉर्म यू आर गेटिंग अंडर दिस स्पोर्टिंग क्लब कमिटी? दिस इज द प्लेटफॉर्म व्हिच ऑल द यंगस्टर्स आर गेटिंग। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? अच्छा है क्योंकि सबको परफॉर्मेंस, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कोई एक मैच में परफॉर्म कर रहा है, कोई दूसरे मैच में, तो सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच जय, ऑल द बेस्ट। Keep holding your head high and perform nicely. Thank you so much. This was Jay, and we'll be back in the commentary box in a short while. Thank you so much.
tea interval. Umpire is giving the signal. Jay Thakkar once again coming on to bowl. Will go right arm round the wicket. On strike it will be Siddhant Singh. Straight down to the throat of mid-off fieldsman, but spilled out at the last moment. What a start it would have been. That was as simple as it gets. Would have been a great start for Sunrise Sports Club Association. This is the finale of under 14. You are watching. Sanmeet now on strike. Goes out to track. Nicely played. Down to the mid-on region. Single. Showing some signs of positivity by both the batsmen. A lucky one for Siddhant Singh. Jay Thakkar growing in confidence. Nicely bowled this time, nicely defended this time by Siddhant Singh. 3 deliveries to go in this over. The first over after the post-tea interval. This time off the front foot. Oh, that was a stumping chance. Definitely this time Siddhant Singh is back in the pavilion. Outstanding bit of glove work from the wicketkeeper. Very good glove work from Arnav Mirge. Absolutely great. The first attempt he could not hit the wicket. That at the second attempt he could destroy the bails. Definitely. You can see the action replay. Quite bit of good action from Jay Thakkar. Siddhant wanted to poke at the delivery outside the off stump. A very good stumping effort from the wicket keeper. New batsman coming in, Ajay Pal. 243 for 6. Early success for team Sunrise Sports Club Association. बढ़िया गेंद इस मर्तबा हल्के हाथों से खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में. कोई रन लेने का जोखिम नहीं उठाया यहाँ पे बल्लेबाजों ने. एक आखिरी गेंद आनी शेष इस ओवर की. बढ़िया गेंदबाजी लय में जय ठक्कर चौथा विकेट चटका चुके हैं. बढ़िया गेंद फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए बल्लेबाज अजय पाल. ओवर की हुई है समाप्ति. 68 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 243 6 विकेट के नुकसान के ऊपर. गेंदबाजी की कमान दोबारा संभालने आए हैं अद्वैत. 2 विकेट चटका चुके हैं इस पारी में अद्वैत. अगली गेंद इसी के बीच में सन्मीत बल्लेबाजी करते हुए प्योर डिटर्मिनेशन अभी भी दिखाते हुए एक शोर संभाले हुए 86 रन की नाबाद पारी पे बल्लेबाजी करते हुए सन्मीत. अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल हर हाथों से कलाई के सारे खेल दिया है. मिड ऑन के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया.
जैसे 1 रन की बदौलत सनमीत बल्लेबाजी करते हुए 87 रन पर 13 रन दूर मैजिकल फिगर से, जो कि कल विराट कोहली ने पर्थ में स्कोर किया था। अपनी टेस्ट क्रिकेट का 30वां शतक जड़ा था उन्होंने। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे अजय पाल, राइट हैंडेड बैट्समैन। एक सिली पॉइंट तैनात, एक फर्स्ट स्लिप। बढ़िया गेंद, थोड़ा सा पिछली खेल थे यहां पे, सीधा कवर्स के हाथों में, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। बढ़िया गेंदबाजी अद्वैत द्वारा। बढ़िया गेंद दोबारा हल्के हाथों से इस बार पुश करते हुए शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, फील लेते हुए गेंद का बल्ले से यहां पे। बढ़िया गेंद इस मर्तबा, थोड़ी सी धीमे आई ये गेंद बल्ले पे। काफी अच्छे मिश्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए अद्वैत। ये हवा में गेंद, लेकिन बाल बाल बच गए यहां पे। स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आता हुआ, लेकिन आसानी के साथ अपने शोर में पहुंच चुके। बढ़िया गेंदबाजी यहां पे अद्वैत की। बढ़िया ओवर ये रहा फिलहाल तो। ओवर की हुई है समाप्ति। 69 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 244, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद ऐसे के बीच में जय ठक्कर की नई ओवर। क्या 5 विकेट ले पाएंगे इस पारी में? 4 विकेट चटका चुके हैं जय। सामने है सनमीत। कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस में कन्वर्ट किया, 1 रन चुराने की कोशिश, थ्रो आता हुआ स्ट्राइकर एंड पे, काफी खराब थ्रो। पिछले ओवर में कैच लपक नहीं पाए थे वो क्षेत्र रक्षक, और इस मर्तबा जबकि सीधा हाथों में गेंद थी, काफी यहां पे मिसकम्युनिकेशन था बल्लेबाजों का, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। रनआउट के स्वरूप में विकेट चटकाना यहां पे बहुत आवश्यक था, क्योंकि अभी भी 4 विकेट बचे हैं यूनियन क्रिकेट एकेडमी के। लेकिन भाग्य ने साथ दिया, 1 रन जोड़ा। सनमीत पहुंचे 88 पे। अगली गेंद सामना करेंगे अजय पाल। बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से इसको डिफेंड किया, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। बढ़िया नफीतुली गेंदबाजी करते हुए यहां पे जय ठक्कर। 3 गेंदें अभी भी आनी शेष इस ओवर की। अपना खाता अब तक खोल नहीं पाए अजय पाल। बढ़िया गेंद, सीधा सीधा निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। टर्न के लिए खेल रहे थे, लेकिन गेंद सीधा निकल गई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पे जय की। बाल बाल बच गए यहां पे, ऑप्शन से ज्यादा दूर नहीं थी। बढ़िया गेंद, दोबारा चकमा देते हुए यहां पे जय ठक्कर बल्लेबाज अजय पाल को असमंजस में पाए गए हैं फिलहाल तो। जिस तरह की बेहतरीन सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं जय। बढ़िया गेंद, इस बार कट करने की कोशिश की थी। तीसरी डॉट गेंद आती हुई, ओवर की हुई है समाप्ति। बहुत ही बढ़िया ओवर यह रहा जय ठक्कर द्वारा। 70 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 245, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर।
दोबारा अद्वैत गेंदबाजी करेंगे स्पोर्टिंग क्लब कमिटी एंड की तरफ से। बहुत ही बढ़िया ढंग से खेल दिया है, बैकफुट पे जाके कलाई के सारे बाउंड्री जाती हुई डीप मिड विकेट क्षेत्र में। काफी लंबे समय के बाद एक बढ़िया हिट आता हुआ सनमीत के बल्ले से। सनमीत जा पहुंचे हैं 92 रनों पे, 8 रन मात्र दूर मैजिकल फिगर से। कदमों का इस्तेमाल बढ़िया ढंग से ड्राइव किया है, लेकिन शॉर्ट कवर पे क्षेत्र रक्षक तैनात चुस्तैनी के साथ क्षेत्र रक्षण करते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा है 49 रन, 249 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 197 गेंदों का सामना करते हुए 92 रन पे बल्लेबाजी करते हुए सनमीत। अगली गेंद हल्के हाथों से डिफेंड करते हुए फ्रंट फुट में बढ़िया गेंदबाजी यहां पे अद्वैत की काफी पीछे रखी थी ये गेंद, जबकि काफी फ्रंट फुट पे आ चुके थे सनमीत। 8 रन दूर मैजिकल फिगर से। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, हड़िया कलाई के सारे हल्के ढंग से खेलते हुए मिड ऑन के क्षेत्र में, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। अगली गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से इसको खेल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। जय ठक्कर वहां पे तैनात 1 ही रन से संतुष्टि जताई। स्कोर जा पहुंचा है 250 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 250 अप फॉर यूनियन क्रिकेट एकेडमी। नाइस बैटिंग एफर्ट फ्रॉम ऑल द बैट्समैन। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से इसको खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। ओवर की हुई है समाप्ति। 71 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 250 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। जी बिल्कुल, जैसे कि उनके कोच यूनियन क्रिकेट एकेडमी के कोच किशन पांडे जी ने कहा कि 300 से 325 रन स्कोर करने का आप कोशिश प्रयत्न जरूर करेंगे। तो अब तक 250 रन बने हैं, अभी भी 4 विकेट उनके पास है। 71वां ओवर समाप्त हो चुका है। जय ठक्कर दोबारा आते हुए गेंदबाजी के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद, बढ़िया डिफेंसिव शॉट दोबारा सनमीत द्वारा सम्मान देते हुए अच्छी गेंदों को 201 गेंदों का सामना कर चुके हैं, बल्लेबाजी करते हुए 93 रनों पे। कदमों का इस्तेमाल, थोड़ी नीचे रही है गेंद, लेकिन हल्के हाथों से दोबारा सम्मानजनक शॉट लगाते हुए सनमीत। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली आप देख रहे हैं। डीप मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक को अब 30 यार्ड सर्कल के अंदर लाया गया है। मिड विकेट के क्षेत्र में थोड़ी सी रणनीति यहां पे अपनाते हुए कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया ढंग से खेल दिया। गेंद जारी है यहां पे मिड ऑन के क्षेत्र में। बढ़िया प्रयास किया था क्षेत्र रक्षक ने, डायरेक्ट हिट अगर लगता तो जरूर खतरनाक हो सकता था, लेकिन इस 1 रन की बदौलत सनमीत पहुंचते 94 स्कोर पे। 251 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक एंड पे आते हुए अजय पाल 11 गेंदों का सामना किया और अब तक खाता खोल नहीं पाए। बढ़िया गेंदबाजी चलते हुए अगली गेंद जय ठक्कर की, बैकफुट पे जाके इस मर्तबा कट किया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, बढ़िया रोका उस गेंद को और 1 ही रन तक सीमित रखा। इस मर्तबा अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज अजय पाल। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, दोबारा डिफेंसिव तरीके से खेल दिया, डॉट डिलीवरी।
एक आखिरी गेंद आनी शेष इस ओवर की। बढ़िया गेंद डोफारा, एक फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट। ओवर की हुई है समाप्ति 252 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ फिनाले का मुकाबला यूनियन क्रिकेट एकेडमी बनाम सनराइज स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के बीच फिनाले का मुकाबला स्पोर्टिंग क्लब कमेटी थाने शताब्दी चषक अंडर 14 सिलेक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्टिंग क्लब कमेटी थाने। अद्वैत गेंदबाजी करते हुए दोबारा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पूरा पावर पैक ऑफ साइड फील्ड आप देख सकते हैं। एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद हल्के हाथों से खेल दिया कलायु के सहारे। मिड विकेट के क्षेत्र में एक रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। फील्ड जब आपकी ऑफ साइड में सेट है तो आपको ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी गेंद करनी होगी। लेग स्टंप पे अगर आप गेंदबाजी करोगे तो आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट होता रहेगा। सनमीत 6 रन मात्र दूर फिनाले में शतक से। क्षेत्ररक्षण में तब्दीली। फील्ड थोड़ा सा यहां पे स्प्रेड होता हुआ मात्र एक स्लिप तैनात किया गया है। पटकी हुई है गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेल दिया है इसको। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में एक रन मात्र हुआ है यहां पे प्राप्त। धीरे धीरे ट्रिपल डिजिट की ओर बढ़ते हुए सनमीत। बैकफुट पर जाके क्रंच कर दिया इसको सीधा, लेकिन कवर्स के हाथों में ये गेंद। चाय के बाद काफी धीमी रही है जो रन रेट, मुझे लगता है बढ़नी चाहिए, लेकिन इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया हिट। गेंद हवा में डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 बाउंस गेंद गई 4 रनों के लिए। जैसे कि मैं कह ही रहा था कि काफी धीमी रही है बल्लेबाजी की जो गति रही है, जिस गति से रन बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक हावी प्रहार करते हुए एक स्लॉक स्वीप के द्वारा अजय पाल अपना पहला चौका जड़ते हुए। अगली गेंद अद्वैत की, बढ़िया ढंग से डिफेंड किया इस गेंद को। एक आखिरी गेंद आनी शेष, 73वां ओवर चलता हुआ। इस मर्तबा रडार में थी ये गेंद, बढ़िया ढंग से खेल दिया डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर का। ओवर की हुई है समाप्ति 73 ओवर के बाद। स्कोर हुआ है 262 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, काफी आगे की थी गेंद, अद्वैत ने भरपूर फायदा उठाया। बहुत ही बढ़िया लाजवाब शॉट डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। सीधा सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं CricYard.in के माध्यम से। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। 29 नवंबर से शुरू होने वाला है और एक बढ़िया महासंग्राम। शौर्य आए हैं गेंदबाजी के लिए अपोजिशन एंड से। शॉट ऑफ लेंथ, ये गेंद हल्के हाथों से इसको डैप कर दिया है। गेंद आ रही है थर्डमैन के क्षेत्र में और एक चौका आता हुआ सनमीत के बल्ले से, यानी कि वो पहुंच चुके हैं 99 पे। 99
बस एक रन दूर मैजिकल फिगर से। अगली गेंद शौर्य की। बढ़िया गेंद इस बार, और ये वो मैजिकल रन है, मैजिकल फिगर, सेंचुरी इन द फिनाले। Sanmeet Kotmire is the name. Applause from the dugout. What an epic inning it has been. बहुत ही बढ़िया पारी, ग्रेट डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, पेशेंस, 100 of 208 deliveries. He knew he had ample of time, not to worry about the overs, not to worry about the balls. Definitely he had made immense today. बढ़िया गेंद इस मर्तबा हल्के हाथों से इसको डैप कर दिया है दोबारा शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में। बढ़िया थ्रो आता हुआ, लेकिन अभी भी चुस्ती और तंदुरुस्ती दिखाते हुए सनमीत एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। क्या क्षण था वो जिसमें सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। चार गेंदें अभी भी आनी शेष। आखिरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल बढ़िया ढंग से खेल दिया है इसको डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। एक रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। ओवर की हुई है समाप्ति। 74 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 269, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। और ये वही क्षण था जहां पे सनमीत ने अपनी सेंचुरी पूरी की। बहुत ही बढ़िया नॉक, 100 रन 208 रनों पे। सिंगल चुराने की कोशिश और आसानी के साथ थोड़े वेवर थ्रो के साथ पूरा किया सिंगल। अगली गेंद इस बार स्लॉग हिट, कॉ कॉर्नर एरिया में बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे। मात्र एक रन से संतुष्टि लेनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। 102 रन पे बल्लेबाजी करते हुए सनमीत और नॉन स्ट्राइक एंड पे अजय पाल, जो कि काफी अपसेटल्ड नजर आ रहे हैं 12 रन की निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए। कदमों का इस्तेमाल, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हल्के हाथों से इसको डैप कर दिया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। एक रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। दूसरे रन के लिए निकलते हुए दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे, लेकिन तीसरा रन यहां पे पूरा करते हुए बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है इन 3 रनों की बदौलत 274 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 गेंदें अभी भी आनी शेष। अद्वैत
अगली गेंद करते हुए 2 विकेट चटका चुके हैं अब तक अद्वैत 74 रन देकर। अद्वैत के स्पेल का 20वां ओवर, जिनमें 2 विकेट चटकाए हैं अद्वैत ने, और इस बार बैकफुट पर जाके बढ़िया हिट जरूर लगाया, लेकिन सीधा कवर्स के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक तैनात, गैप ढूंढ नहीं पाए, यहां पे विफल रहे बल्लेबाज। डॉट डिलीवरी। इस बार काफी फ्लाइट दी थी गेंद को, बढ़िया ढंग से इसको गाइड कर दिया, मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। 275 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक आखिरी गेंद आनी शेष इस ओवर की। फ्लाइटेड या डिलीवरी बहुत ही बढ़िया ढंग से खेल दिया, मिड विकेट के क्षेत्र में थोड़ा सा यहां पे दूर रहे क्षेत्र रक्षक। चौका आता हुआ सनमीत के बल्ले से। 75 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 279, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 279 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। Shaurya coming on to bowl the next over. Slight misfielding by the fielder at the cover region. Just allowed the batsman to cross over for a single. 280 runs on the board for the loss of 6 wickets. This is the 76th over. Next delivery on strike, it will be Sanmeet batting brilliantly on 109 runs. Goes down the track, hit uppishly. Oh, should have been a catch down to the mid-on region, but not to be this time as well. Misfielding, and the ball is racing towards the boundary. 3 runs taken by the batsman. Sanmeet moves on to 112. Team moves on to 283 for the loss of 6 wickets. A good partnership developing between those two batsmen. On strike, it will be Ajay Pal. You see the action replay of that catch should have been taken. Rocks on the bat foot, plays nicely down to the extra cover region. Just for a single. Getting tougher and tougher for the bowlers out there in the middle. 284 runs for the loss of 6 wickets. Very good delivery this time. Nicely played by Sanmeet once again. Dot delivery nevertheless. 2 deliveries still to go in the 76th over of this inning. Nicely played out the front foot. Nicely fielded there by Shaurya of his own bowling. Brilliant effort from Shaurya. Goes down the track. This is played uppishly, and this is over the mid-on fieldsman. It's going down to the boundary. Nicely fielded. Once again, 3 runs been taken by the batsman.
Batting brilliantly, Sanmeet. Looking in full control right now in the middle. 115 for him. And at the end of the 76th over, it's 287 for the loss of 6 wickets. You can see the match scores, match summary. Sanmeet Kotmire batting brilliantly on 115 of 218 deliveries. Saurav Sinha played a fine knock of 62 of just 59 deliveries. Adarsh Kanojia, the third half centurion, 53 runs of 64 deliveries. Jai Thakkar has taken 4 wickets. Advait Joshi has taken 2 wickets of 20 in 20 overs. Jai Thakkar has completed 20 overs as well. 4 for 47. Nice figure. Coming on to bowl, Manthan Gowda. Nicely played off the front foot, off the wrist. By Ajay Pal. Will be on strike. Sanmeet still showing no signs of tiredness. He has batted 219 deliveries. Outstanding. Short of delivery way down the outside. Dot delivery. Manthan Gowda, he has looked in good rhythm since morning. This is the 4th spell. Been quite unlucky. Should have had at least 2 wickets under his name. This time wanted to drive it uppishly, but no connection. Nicely bowled once again, beating the batsman. All ends up. Went straight to the wicket keeper. That's what Manthan Gowda offers you. Right on the off-stump corridor, asking too many questions to the batsman. First it was Ansh, the opening batsman. Now it is Ajay Pal. He has troubled the right-handed batsman quite a little bit. Nicely bowled this time. Just a slight miscommunication. Direct hit, and it would have been shambles for the non-striker and batsman Sanmeet, not to be this time once again. Luck favors the brave. That's what is happening. Sanmeet Kotmire still there. 116 not out of 219 deliveries. It was really close, if you see. Nicely bowled this time once again. Fox, the batsman. 3 times he has beaten the bat in this over. The end of the 77th over, it's 288 for the loss of 6 wickets for team Union Cricket Academy.
You were starting up. Shaurya once again back in action. Nicely driven off the front foot of the wrist down to the mid-on region for a single. .289 for the loss of 6 wickets. Ajay Pal once again back on strike. Still bowling with the old ball, I believe. They have an option to take the new ball after the 75th over. They haven't taken that option up till now. This is nicely bowled. Just missed the off stump by a whisker, I believe. You see nice action from Shaurya. Oof, that was pretty close. Nicely bowled once again. Went back on the back foot. Played nicely down to the cover region. Dot delivery nevertheless. Still 3 deliveries to go in this over. It's been a good over from Shaurya, giving away nothing to the batsman. This is slog hit down to the deep square leg region. Couldn't get hold of it, but just a single. 290 runs on the board for the loss of 6 wickets for Union Cricket Academy. Rolling over nicely. Sanmeet batting still brilliantly out there in the middle. 117 runs of 220 deliveries, and Ajay Pal batting on 16 of 31 deliveries. Rocked on the bat foot, played uppishly down to the cow corner region. Slight misfielding over there by Jay Thakkar allows the batsman for going over, crossing over for a couple of runs. So at the end of the 78th over, one ball still remaining. One ball still remaining in this over. Goes on the back foot, played nicely down to the backward point region. A wayward throw. No harm being done. So at the end of the 78th over, it's 293 for the loss of 6 wickets. Once again, 50 runs partnership of 62 deliveries. A very good partnership between those two batsmen, Sanmeet and Ajay. 50 runs partnership. You can see the partnerships. The first inning, the first partnership yielded 59 runs of 118 deliveries. The second partnership yielded Saurav Sinha and Sanmeet 82 runs of 117. Third partnership just 2 runs. The fourth partnership Adarsh Kanojia and Sanmeet 80 runs. Fifth, sixth wasn't more about them, but Sanmeet has been a part of each and every partnership. Still going strong. Going down the track, played nicely, guided it down to the deep backward point region. A slight misfielding allows the ball to roll over the boundary lines. Good hit, good start of this over from Sanmeet. 79th over in progress. In action, Manthan Gowda, the first delivery. Jay Thakkar at deep backward point region, slight misfielding. It has been a long day for all the fielders. This is wrapped down the pads, but once again neglected by the umpire. That was a confident appeal, but I believe the impact was quite outside the off stump. Very good delivery, this by Manthan.
This time goes on the front foot. This could have been a run out had he collected the ball on the first attempt. Not to be once again a single stolen out there. 298 runs on the board for the loss of 6 wickets. Still 3 deliveries to go in the 79th over. Definitely it would have been the tired legs of the fielder over there. Quite an hectic day for the fieldsmen out there. 298 runs. Nicely bowled this time. Just a cross seamer, I believe. Nicely played up Pishley, and that's nicely driven down to the extra cover region for a boundary. Outstanding hit this time from Ajay Pal. That shows his confidence, and that's a 300 up, 302 for 6. It has been outstanding performance from the batsman of Union Cricket Academy. 302 for the loss of 6 wickets. Ajay Pal batting on 20 runs and Sanmeet batting on 125 runs. Once again, nicely driven off the front foot. Back-to-back boundaries. Ajay Pal showing his class out there in the middle. Not happy with himself, Manthan, but what a outstanding 2 brilliant drives from Ajay Pal. Score quickly moves on to 306 for 6 wickets. Shaurya starting his new over. Goes down the track, nicely hit down to the mid-on region, nicely fielded by the long-on fieldsman. Just kept the batsman for a single. जो बिल्कुल अब थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेशन दिखाते हुए बल्लेबाज पहले दिन का खेल समाप्त होने के कगार पे है. 307 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर. अजय पाल स्ट्राइक एंड पे. पटकी हुई है गेंद, क्रॉस बैटेड हिट, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए. तीन 311 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर. अभी भी 4 गेंदें आनी शेष. थोड़ी सी रणनीति में यहाँ पे तब्दीली करते हुए, जबकि आखिर के कुछ ओवर्स आज पहले दिन के खेल में बचा हुआ है. अगली गेंद शौर्य की. इस बार क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन कोई क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद नहीं. बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, वहां पे अपने आप को पूरा झोंक दिया. ऐसा लग रहा था गेंद जा रही है 4 रनों के लिए, लेकिन आखिर के मोमेंट में अपना राइट हैंड बाहर निकालते हुए बहुत बढ़िया ढंग से गेंद को रोका. आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण यहां पे करते हुए अथर्व वाडेकर. आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एफर्ट फ्रॉम अथर्व वाडेकर.
इस मर्तबा स्लॉग हिट, गेंद हवा में लेकिन क्षेत्ररक्षक से दूर। आज पूरे दिन जैसे कि भाग्य ने साथ दिया है सनमीत का, उसी तरह से यहां पे चलता आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है सनमीत ने, लेकिन थोड़ा सा भाग्य ने भी साथ दिया। जहां पे उनके बल्ले के बीचों बीच गेंद जाके लगी नहीं है, हवा में गेंद गई है, थोड़ा सा क्षेत्ररक्षक से दूर रही है गेंद। अगली गेंद इसी के बीच में, दो गेंदें अभी भी यानी शेष। बढ़िया गेंद इस मर्तबा, निचला हिस्सा लगा बल्ले का, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। एक ही रन से संतुष्टि जताई, स्कोर जा पहुंचा है 314 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक आखिरी गेंद आनी शेष, 80वां ओवर चलता हुआ, 80th ओवर ऑफ द इनिंग। शौर्य जाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद इस मर्तबा, डॉट डिलीवरी, ओवर की हुई है समाप्ति। After the completion of the 80th over, it's 314 runs on the board for the loss of 6 wickets. Finally, the new ball has been taken. मंथन गेंदबाजी जारी रखेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। स्पोर्टिंग क्लब कमेटी एंड की तरफ से स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज अजय पाल। कदमों का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया ढंग से खेल दिया है, स्लॉग बैटिंग हिट, काउ कॉर्नर पेन पे गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए यहां पे अजय पाल, नई गेंद है, भली भांति जानते थे, लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया, बढ़िया ढंग से खेल दिया, काउ कॉर्नर के एंड पे आता हुआ नई गेंद से पहला चौका। अपनी मंशा को जताते हुए यहां पे ज्यादा से ज्यादा रन एकत्रित करना चाहेंगे। 318 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर यूनियन क्रिकेट एकेडमी की टीम। अगली गेंद इसी के बीच में, इस मर्तबा स्लैश हिट करना चाहते थे, ऑफसाइड में, कोई संपर्क नहीं बल्ले से, सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सनमीत बल्लेबाजी करते हुए 127 रनों पे 228 गेंदों का सामना किया है। अजय पाल बल्लेबाजी करते हुए 34 रनों पे 39 गेंदों का अब तक सामना किया है। कदमों का इस्तेमाल, वेवर्ड हिट करना चाहते थे, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से। जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने टीम के लिए, सेल्फलेस क्रिकेट का मुजाहरा यहां पे अजय पाल द्वारा। ज्यादा से ज्यादा रन एकत्रित करने का प्रयास। दोबारा बढ़िया हिट, इस मर्तबा कैच होने की आशंका थी, लेकिन कैच लपकने में असफल रहे यहां पे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक। मुझे लगता है आज के दिन का ये चौथा ड्रॉप कैच है। थोड़े से नाखुश जरूर मंथन, प्रयास बहुत ही बढ़िया उन्होंने की है सुबह से। बढ़िया गेंद, फुल फेस ऑफ द बैट दिखाते हुए, ड्राइव करते हुए कवर्स के क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 319 6 विकेट के नुकसान के ऊपर।
एक आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। बढ़िया नफीतुली गेंदबाजी करते हुए मंथन, कदमों का इस्तेमाल, थोड़ी सी उछाल थी ज्यादा इस गेंद पे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आता हुआ, लेकिन काफी आसानी के साथ पहुंच गए बल्लेबाज। थ्रो काफी वेवर था वहां पे, काफी बढ़िया प्रयास किया उसको रोकने का मंथन ने। ओवर की हुई है समाप्ति 81 ओवर के बाद। स्कोर हुआ है 320 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। After the end of the 81st over, it's 320 runs on the board for the loss of 6 wickets. The over rate has been good from Sunrise Sports Club Association. On strike it will be Sanmeet. From the opposition end it will be Arjun. Going right arm over the wicket. As he played off the front foot, showing the full face of the bat down to the backward point region for a single. On strike once again it will be Ajay Pal, who is looking out to be a little bit aggressive. Has played quite good shots in the middle. Nicely bowled this time, not giving too much room for the batsman to open his shoulders. Arjun has been a good operator of a new ball. Gives a little bit of pace and tries to swing the ball in the air. Next delivery. This was way down the leg side. Still 3 deliveries to go in this over. This is the 82nd over of the inning. Toiling hard for the wickets, those bowlers. The fielders look a little bit tired. Nicely bowled this time once again by Arjun. Showing some energy out there in the middle. Ajay Pal, 35 of 45 deliveries. Sanmeet Kotmire, 129 runs of 230 deliveries. Quite a marathon knock it has been from Sanmeet Kotmire. Goes down the track. Nicely played down to the mid-wicket region. Nicely fielded just for a single. Good throw. Straight at the wicket-keeper's gloves. Last delivery of the 82nd over. 322 on the board for Team Union Cricket Academy. You're watching Sporting Cricket Club Thane Shatabdi Chashak under 14. Finale. I believe one last over because 2 minutes, 3 minutes remaining. It's 3:47 p.m. The play will continue till 3:50 p.m. 3 minutes to go. One last over for the day. What a day it has been. It has been all about
Sanmeet. A marathon innings, 129 of 231 deliveries. Ajay Pal batting brilliantly, showcasing his talent, 36 runs of 46 deliveries. With the ball in hand once again, Manthan Gowda. Goes down the track, plays nicely down to the long on region. It was a brilliant effort by the fieldsman at the mid-on region, but couldn't save that boundary. Last over of the day, definitely they all want make immense out of it. 40 of 47 Ajay Pal, 326 runs on the board. Manthan once again going right arm over the wicket. Once again goes down the track. Way down the offside delivery. A good ball this by Manthan. He knew that Ajay will step out once again. 4 deliveries still to go. Goes down the track once again. A slight outside the off stump. Good clear communication. No run being stolen over there. 3 deliveries still to go. Goes down the track once again. Carbon copy of the previous 2 deliveries. It has been a good comeback by Manthan after the first boundary. Has kept a little bit outside the off stump that delivery. Haven't given anything to work out for Ajay. Marking his guard once again. This time waited on the back foot for the delivery to come. That the outside edge flew down to the third man region just for a single. Last delivery of the day coming up. 327 runs on the board for the loss of 6 wickets for Union Cricket Academy. From playing the first delivery of this inning to playing the last delivery of the day. Sanmit Kotmire. That sums the day for him. Nicely bowled this time, but down the leg side. And it's the end of day 1 for this finale between the Union Cricket Academy and Sunrise Sports Club Association. You're watching Sporting Club Committee Thane Shatabdi Chashak Under 14 Selection Cricket Tournament 2024-25 organized by Sporting Clubs Committee Thane, and 327 for 6 is the score to remember. And Sanmeet, what an outstanding performance it has been. Quite a marathon knock. Sanmeet Kotmire, 129 runs of 232 deliveries.
फॉर दैट फिनाले टर्न। कैसे लग रहा है? 129 रन बनाए हैं, तालियां होनी चाहिए पहले तो, सब लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। कैसा लग रहा है? सर मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे को होना चाहिए, मतलब कि और थोड़े लूज बॉल को कन्वर्ट करना चाहिए मुझे और मेहनत करना चाहिए। लेकिन कैसा लगा जब आप बैटिंग करने आए थे, तो आपको लगा था कि आज सेंचुरी ठोक के जाओगे आप वापस? नहीं ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने। मैं सिर्फ वो मेरिट पे खेलना था, मेरे को वही सोच रख के हर एक बॉल वही करके हो गया। हाउ वाज द विकेट प्लेइंग इन द मॉर्निंग? किस तरह से पिच बिहेव कर रहा था? पिच तो एकदम सीधा बॉल आ रहा था और जो ये साइड वाला जो एंड है उधर थोड़ा सा नीचे रह रहा, बाकी विकेट बहुत अच्छा है। टायर्ड तो आप बिल्कुल नहीं रहे अभी भी? आपको मतलब 150 150 बॉल और दिए जाए तो भी आप खेल सकते हो, ऐसा लग रहा है? नहीं सर, खेल तो सकता हूँ पर देख के खेलना। क्या लगता है अब कोच सर ने क्या कहा, स्ट्रैटेजी क्या होगी? 327 रन तो आपके बन चुके हैं, सो और कल आके बैटिंग करना है कि कैसा है, कुछ स्ट्रैटेजी? अभी थोड़ा बैटिंग करना है और डिक्लेयर कर देना। ओके, कैसा लगा ये प्लेटफॉर्म के बारे में जो अंडर 14 के आप सबको मिल रहा है, तो कैसा लगा खेल के? सर बहुत अच्छा लगा, इसमें चांस मिलता है सर, मतलब एमसीए के टूर्नामेंट है ना सर, तो वो उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं ना मुंबई टीम के लिए। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड डियर, वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। दिस वाज शनमीत, जो कि आज 129 रन इन्होंने जमाए थे। बहुत ही बढ़िया ग्रिट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ बल्लेबाजी की है, लेकिन 327 रन बने 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो पहला दिन आज समाप्त होता है, कल देखते हैं फिनाले के दिन में किस तरह का रिजल्ट आता है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, कल दोबारा मिलेंगे 9:30 बजे यहीं पे सेंट्रल के मैदान में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू। Highlights package at the end of the day's play. It has been a great day's play from both the teams. 6 wickets going down, but at the cost of just 327 runs. Jay Thakkar taking 4 of the wickets, 2 being taken by Advait. It was all about Sanmeet, 129 runs. Shubham scoring Saurav scoring 62 runs and Adarsh scoring 52 runs was one of the highlight point, and 41 runs from Ajay Pal. Good partnership by Sanmeet with all of them. So stay tuned for the action in the second day. Of Sporting Cricket Club Thane Shatabdi Chashak under 14 selection cricket tournament 2024-25, organized by Sporting Club Committee Thane. Till then, goodbye. We'll meet tomorrow once again. This is Anashray signing off from Day 1. Thank you so much.